putting the session on recording. So friends, as we started the journey on 5th of September, just a recap with the first session with Mr. Anil Singhvi, Ramdev Agarwal ji, S. Naren, Navneet Munot and Mr. Mahesh Patil, and an awesome beginning. And followed by that, we had Dr. Radhakrishna Pillai and the book launch. And then we had Professor Dr. Ajay Pathak and 5 of our friends. And then we had Bollywood movies learnings with Saurav and Amit Bhai and 5 of our volatility coaches and friends. The last week we had Dr. Himanshu Buch and Dr. Joshita. And the episode 6, which was really special one, the MFD's next generation, all the 12 speakers. This was one of the most viewed session on YouTube also, and also as far as audience is concerned. And let's have a little recap for the session. Our objective is very simple. We connect the dots between the people and their financial... Handling relationship of second generation, third generation, and most of them have inverted, and they are the very first time invested in the mutual fund. So, of asset management side of how the other side of the coin works. So he was not continuing it properly. Every month he was not paying. The bank was charging him on a regular. This grabbed my interest and fascinated me to know more about this industry. Yours इसमें सिर्फ यही था मेरा initial कि financial incentive नहीं. You can simply similarly use Instagram and Facebook to market our services. This is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly. Observing him and his work over the years gave me something that I found truly life-changing. And what we got to know is he was thinking, "अरे मेरा तो 50,000 तक का है." So here we are today. We'll be talking about fundamental analysis, and who is the better person other than Mr. Shailesh Saraf to talk. And he is an authority in some of the concepts which he has developed. And in the times to come, I think more and more people will be benefited out of whatever he is sharing and his contributions. So they're really, really nice, and let's look forward to learn from him. I will just now welcome and Mr. Shailesh Saraf. Over to you, sir. Thank you, Karan bhai. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for inviting me. One small poll we will have while you are there. I just created just before we begin. So we'll just have a poll. Okay. So this is a small poll. Now, today we will be doing 2-3 polls during all these 3 hours. Okay, 2 hours session. So let's launch the poll and let's see how all of you answer. Okay. What is the asset allocation? Can you see the poll? No, not yet. Yes. What is the asset allocation you will follow now? 40 equity, 10 debt, 20 gold, or 20 equity, 60 debt? This is for all of you. Let's see what all of you are thinking as of now. And
60% of you have participated so far. 70%. Look forward for the rest of us to put in your idea. It's like so mixed, huh? Like I think in all the cases we have some answers. The audio is too low. Okay. Shailesh, you can also speak something so that the audio can be checked in the meanwhile. Sorry? Is the audio okay? Shailesh is also? Is my audio okay, friends? Okay, so let's yes. Yes. So. Okay, so just sharing the results. 25% of us are thinking that 60 equity, 20 debt, 20 gold is good. And 24% of us are thinking 40 equity, 40 debt, 40 gold. And 24% thinking 40 equity, 60 debt and no gold. So that's how the whole thing is. But like everybody is having some decision that is more important. The idea of bringing asset allocation is becoming more and more important with the days to come. So we will take it further after the session. We have few more polls. But for now, over to you, Mr. Shailesh Saraf. Thank you so much. Thank you, Kanakji. Thank you for inviting me. Is my voice clear, friends? So good evening, friends. We should all thank Kanakji. He keeps organizing these sessions. So much of time, 21 weeks, and that is also free of cost. So it is our duty to attend and spread these learnings because he's making an effort to spread these learnings to so many people. So today I'm going to share something very new, which we have just launched for fundamental analysis. And after many years, I was able to put a score to a fundamental analysis system. And today we have put this is first time I will be talking also that we are also launching that score. We have also made the score for all the stock holdings of all the mutual funds in the country also. And we were doing our AI engineering and predictive analytic testing, and the score, the fundamentals are even working in mutual funds holding. So that is what we are going to share. So what is the new score which we have found out, which will give us a very good idea about the companies? Because fundamentals, some people think it takes a long time to learn. But what we are trying to create is, can we create a score so that you can immediately know the quality? Like somebody was asking about the quality business. Can you know about a business instantly? Right? Is it possible? So I'll show you what we have done and then give you the basics behind it. So and we have launched this free also. So you can also start seeing, this is the first time we have made an app free now. Some part of the app free also. So I want to show you, and then I'll take you to the details of the fundamental analysis, that how companies can be studied. Okay, so we can just show. Yeah, website, directly website. Website, yeah. And then we'll take you the details, because if you want to know a quality business, how quickly you can know a quality business of all 1,500 companies and of all mutual funds instantly. So this is the new free thing. This is only one thing which is free, rest is all paid. This is the free thing which we have added in our website. You can also access it. So let's see, let's check the quality of your stock. Okay. Which stock? So let's take HDFC Bank. I'm just showing you HDFC Bank. Okay, so basically these, according to me, these are, wait 1 second, because just go back. Yeah, these are some of the questions which I had when I have to take a decision to buy or not to buy, right? Obviously, we need to know about the quality business. We need to know about its segment revenue, the market share, because this helps in the, that whether the company will keep on doing well in the future. If a company has already taken a market share, okay, the market share cannot be evaporated in a day.
Okay, so it is how you, what are the entry barriers you create in the business. This is very important. Obviously, then the third very important aspect is whether the company is cheap or not cheap to invest. That's another challenge for the investors. Okay, at what price can you buy? So we have developed a fantastic tool which I applied for a patent, which has, from all the technical analysis, we made our own technical analysis that at what price can you buy? What are the risk factors of HDFC Bank? Are mutual funds buying HDFC Bank? Sector analysis of HDFC Bank. Then you can check the chart, you can check the annual reports. And this is what we've given free for each company now. So basically 1,580 companies, this data is available free now. Okay, so let's study the quality business score. First, understand the fundamentals of the company, and then we'll go to the other parts, right? But first, the business part. So quality business score is 18 of HDFC Bank. Okay, so obviously it's a great company. So we observe this is a great company. Now, how is this score calculated for all the companies? Now, there are 4 most important parameters. Please. Okay, there are 4 most important parameters, okay, which decides the fundamental of the business of the company. Okay, obviously number 1 is the sales growth. Okay, why sales growth is important? I'll give you a small explanation because PPT sales growth. So I explaining you, because if the company doesn't have any sales growth, then the product is not selling in the market. It's common sense, right? So if there is no sales growth, the company, if the company is showing profits and they're not showing sales growth, that means the company is not generating profit from its businesses. So let's discuss sales growth for 2-3 minutes. And then we'll discuss the 4 points, and then we see that how you can understand the businesses. So basically sales growth data. I'll show you the sales growth data. Now in 1920, there are 712 companies which has shown sales growth. But if you take just 1% income, 1% sales growth in 5 years, only 260 companies get left. That means sales growth is very, very tough to do. Now, if you take a simple 10% sales growth, last year 374 companies did sales growth. But if you do take 5 years of data, there are only 54 companies which can survive sales growth in 5 years. Only 54 companies. So basically, sales growth is a very, very difficult thing. And you can all understand your own businesses that if you're managing a certain funds, I'm hoping that most of you are mutual fund managers here, distributors. So basically, if you want to grow your AUM every year, it is not so easy. Okay. And if you want to grow your AUM by 10%, so that is the sales growth which you will have in your business. So is it easy? Are you able to do 10% sales growth for last 5 years? So you will see that it is not so easy. It requires a lot of management, power, efficiency, intelligence, product knowledge, product innovation, which can give you sales growth, right? Now, a very simple formula which I use, because everybody is too much focused on economy. Myself, I was a very big economist for all my life. From the last 1 year, I've stopped doing economy, because now economy, there are stocks which is beyond economy. Logical, I'll give you one logic. Demonetization came in 2016. The company was doing sales growth 5 years. 2017 GST came. The company is doing sales growth. 2018 capital gain tax and mutual fund. The company is doing sales growth. 19 Indo-Pak tension, sales growth. 20 COVID, continue to sales growth. That means you have to find those companies which is not affected by the economy. That is the first secret of if you want to do fundamental analysis. If you focus on the economy and the stock, you're going to make blunders. You're going to miss a lot of opportunities, because that company is able to do sales growth despite of a bad economy. And that is where you can find good stocks. This is common sense. Agar aap itna kharab economy mein, the company is able to do sales growth. That means there are 54 companies
or 260 companies, despite of all the challenges in the last 5 years, they were doing sales growth. That means you have to focus on those companies which economy is not. Agar economy अच्छा होता, so these companies would have gone to a different level. Now, these are the companies we should know that what are these companies. So whenever we calculate the score, so we give 5 marks to these companies. If they have done sales growth in 16, 17, 18 and 19 and 20, they get 5 score. My entire 22 score is there. So I'll explain you how do I do the score. So you can understand that the company is going through, the economy is not important. The company is going through its own product cycle. So this is the 5 score which it gets if it goes. If it does 4 years sales growth, then it gets 4. If it does 3 years sales growth, it gets 3. If it does 2 years sales growth, it gets 2. So these are the 5 score out of 22. Okay. So I hope that this is common sense, that if the company can do sales growth despite of a bad economy, that stock will do well. And I've seen that this is the #1 reason for the prices to go up. Even if the P is high, these companies continue to go up. अभी अगर आप देखेंगे, I have seen PE does not give you the quality and business. PE is just a valuation metric, friend. PE does not give you the health and the quality of the business. It is just a price factor. आज P कम है, 20 दिन बाद बाजार गिरेगा, US election बाद P कम हो जाएगा. It will not change the business. It is just the price which is different. So fundamental is different, P is different. This is another confusion people have, that P takes care of the fundamental of the company and the quality business of the company. It doesn't. It is just the price factor. Okay. So this is one factor where we give 5 marks for 5 years. Okay. Let's go to the second most important factor. Next slide. Okay. We give a lot of importance to profit growth. See the data. Okay, 10% companies which can grow in last 5 years. There are only 28 companies in India. Only 28 which can grow by 10% in the last 5 years. It is such a difficult thing to do. और आप इसको छोड़ें ना, अपने ही business को देख लीजिए. Are we able to grow our profits by 10% for the last 5 years? That means when you can find those companies which are doing well for the last 5 years, you give them another score, because doing profit is easier. Doing profit growth is different, and profit growth is another very important factor which we saw in our analysis, which takes the prices up of the stocks. So the combination of growth and profit takes the share prices up. So we give 5 marks to companies if they have done profit growth. Even 1% profit growth, they get 1 mark. Because there are only 84 companies which can even do 1% growth, friends. Only 1% growth for the last 5 years is only 84 companies. So we give them 5 marks to these companies. So this is the total of 10. 5 years sales growth, 5 years profit growth. So this is number 10. Okay. Now we give another 5 marks for 5 years to company on return on equity. Return on equity, I have shown in many of my videos, because we have lack of time, I could have shown Warren Buffett videos and many other videos to prove that every investor, they only want to invest in companies which has return on equity greater than 15. They are not interested to invest in companies where the return on equity is less than 15. We have many videos of Ramdev Agarwal ji and many people who are giving very clear things. Warren Buffett said return on equity is a very important parameter. Okay, so there are only 362 companies in India which can do return on equity greater than 15. और ये सिंपल भाषा में आपको बताते हैं कि what is return on equity. समझे, a client comes to you and gives you 1 crore rupees, right? And obviously he will have some expectation if he's investing in the equity market that he should earn at least 15%. So that is the meaning of return on capital. Return of capital is कि हम कम से कम 15% रुपया कमा रहे हैं. So companies जो 15% भी रुपया नहीं कमाता है, they are called rubbish companies. उनमें quality नहीं है, because उन लोग उतना रुपया कमा नहीं पाते.
So basically, in 5 years, there are only 166 companies जो 15 के ऊपर continuously manage करते हैं. Only 166 companies. So that then we give 5 marks. So if they have done 15 all 5 years, they get 5. If they do 4 years, they get 4. If they do 3 years, they get 3. So this is the 15. And another very important factor we give is free cash flow. Very, very important. So again, if you see, there are only 400 companies in 5 years. And if you do sales ratio by 5, there are only 163 companies who can actually generate free cash flow. जिसमें debt नहीं है, and they do a savings. Okay. So these are very, very 4 important parameters, which is very, very important. Because of lack of time, I'll just show you 2 videos. Because Nilesh Shah video, because he's from the mutual fund thing, so you will appreciate. And show the video of Madhusudan Kela. Show them 2 videos because 2 videos are about 30 seconds each. I could have shown you videos of many people, all the top fund managers videos I have, to prove that these are the 4 most important parameters they look. Even Warren Buffett has written this in his annual report for the last 50 years. ये 4 ही चीज देखना पड़ता है फंडामेंटल, और कुछ नहीं देखना है. अगर आप ये 4 चीज देख लिए तो कंपनीज यू कैन ऑलरेडी फाइंड ग्रेट कंपनीज, जो मैं आपको प्रूव करूंगा अभी बाय सम डेटा. तो प्रूव कर दिया है, मैं आपको 2 वीडियो से भी प्रूव कर देता हूं. जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग यही देखते हैं. जितने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो लोग सब यही देखते हैं. दीज आर द फंड मैनेजर सीक्रेट्स. सो इफ यू आर मैनेजिंग, किसी भी फंड मैनेजर से बोलिए, सो सी मधुसूदन केला. सब वीडियो आधा मिनट का है, सो दैट वी कैन कंटिन्यू. So what is the competitive advantage which the company is bringing on the table to build this business, you know? And then, you know, there are plethora of financial statistics which you use. Someone will use A, B, C, D. I use free cash flow. I use ROE, and I use essential, how cheap the stock is. And finally, at the end of the day, Anuj, it is all about valuation. Okay, Vikash. I hope everybody heard. He sees ROE, free cash flow, valuation, और कुछ नहीं देखते हैं. Nilesh Shah, I am showing from Nilesh Shah. सब इंटेलिजेंट लोग देखते हैं तो हम लोग को भी वही देखना चाहिए. Rather than trying to do our own stories, let's learn from all the top guys. Nilesh Shah. आप सौरभ मुखर्जी सुन लीजिए, रेवेन्यू ग्रोथ. फिर मैं आपको वॉरेन बुफे का भी दिखा दूंगा. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ट्रूथ. Quality. Okay, the most important. Now there's a rapid fire coming your way, so you have to quickly answer whatever comes to your mind. Couple of questions. Here's the first one. What would you say has been your biggest lesson in the stock market? Buy quality, quality, and quality. Okay, the most important filter, Nilesh, while selecting a stock? Governance, governance, governance. Okay, a key ratio, any financial metric that is your go-to ratio while you're selecting a company? Company should earn more than the cost of capital reflected in return on capital employed, and it should generate free cash flow. The best stock pick of. Okay, 2 proofs. I have 7-8 videos actually of all the top fund managers in the world, and I have done my study. Now I'll just show you Warren Buffett. हर annual report में लिखते हैं, but people don't see it. So I'll show you that also. So proof, because you know now you have to go into evidence-based research. अब वो बात जमाना गया जो हम लोग सिर्फ अपने मन का ढारा. You have to give evidence-based research. That is the day we are into it. If you have to give in a short period of time. Evidence-based research. Less ज्ञान, evidence more. Proof देना चाहिए सब लोग. मैं proof दे रहा हूँ आपको. This is the website of Berkshire Hathaway. सेम चीज वो फॉलो करते हैं और ये 50 साल से फॉलो कर रहे हैं, अपने एनुअल रिपोर्ट में लिख रहे हैं. एंड एवरीबॉडी फॉलोज द सेम थिंग. ओके, पहला लार्ज परचेजेस, प्रॉफिट अर्निंग होगा, सेल्स होगा जब भी लार्ज परचेजेस होगा. डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिस्टिंग अर्निंग पावर इज प्रॉफिट रेगुलरली होना चाहिए. एंड एक और बहुत अभी किसने पूछा था
कि फ्यूचर का क्या होगा, पास्ट परफॉर्मेंस। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी किसने पूछा था, फ्यूचर प्रोजेक्शंस आर ऑफ नो इंटरेस्ट टू अस, ये वॉरेन बुफे बोल रहे हैं। क्योंकि एक अगर क्वालिटी बिजनेस बन जाता है 5 साल और अगर वो मार्केट शेयर ले लेता है, they continue to do well, they don't do, and when the sales growth or the profit growth goes down in the quarterly results, that is the time you have to worry. Till the time they are continuing the growth, you should hold the stock and forget it. P को भी मत देखिए, till the time they are growing. So ये वॉरेन बुफे बोल रहे हैं फ्यूचर प्रोजेक्शन देखिए फायदा नहीं है, पहले उसका करंट परफॉर्मेंस देखिए, do they have these 4 parameters or not. Number 3, business earning good returns on equity and little or no debt means उसके बाद फ्री कैश फ्लो है। ये 4 प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये 50 साल से अपने एनुअल रिपोर्ट में दे रहे हैं। और मैंने जितना फंड मैनेजर को मिला, अगर आप रामदेव जी का QGLP देखेंगे, क्या है, Q is quality, G is growth of sales and profit, and अगर आप क्वालिटी देखेंगे उसमें फ्री कैश फ्लो ROE दिया। These are the 4 most important fundamental parameters for selecting a stock. Okay, if you now do study, I have 17 gurus books where I can prove it to you that these are the 4 most important parameters. A lot of evidence is there. अभी time short है तो आपको ज़्यादा proof नहीं देते हैं। अब now let's come to the score, which you can see now for all the companies now in the, so basically and 2 score हम लोग देते हैं, 20 हो गया 5 साल का, 4 into 5, and 2 score देते हैं current quarter का sales growth and profit growth. So we calculate every company by 22. Okay, so when we इसको विकास paid में ले आना होगा, this is the unpaid one, जिसमें आपको मिल जाएगा कंपनी greater than है, then if when the paid version is there, I'll show you so that you can see the exact score of the companies also. Okay, so fundamentally, these are the 4 most important parameters to decide the quality of the business. I'll show you another proof. Okay, that if you are investing in quality companies, वो बाजार जब गिरती है, वो स्टॉक सबसे कम गिरती है। ये भी मैं आपको भी प्रूफ करता हूं। Now this is the paid version. So this is the score, exact score is 19. Okay, and यहाँ पर पूरा आ गया उसका क्या EPS ग्रोथ क्या था, 5 साल का ग्रोथ का नंबर्स, और हम लोग बैंक्स में NPA देखते हैं. We do not see free cash flow in banks. In banks we see NPA. So we give the number and then we decide the quality. Okay, so there are only about 75 companies in India which is 18 and above. सिर्फ 75 कंपनी है पूरे भारतवर्ष में, और वो 5 साल में उसका रिटर्न है 300%. सिर्फ 75 कंपनीज है भारतवर्ष में जिसमें क्वालिटी है 18 के ऊपर, ओनली 75 कंपनीज. ओके, नाउ आई विल शो यू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ कि क्वालिटी कंपनीज बाजार में कम करती है. तो डर लगता है ना हम लोग को, ये जो बाजार गिर जाएगा, पी बहुत हाई है, 34 का निफ्टी का पी है, अरे बाजार गिर जाएगा, भी सब 60-40 कर रहे थे. Why? Because we are not investing in quality. Once you're investing in quality companies, you don't need to have fear because it falls the least. I'll show you another proof. Because proof of the top 20 companies. Okay, so according to my data, these are the top 20 large cap companies which has the highest score. Okay, About India has a perfect score. These are the top 20 companies of India right now. Okay, Abbott, Bajaj Finserv, Britannia, Larsen & Toubro, Infotech, Aurobindo Pharma, Infosys, TCS, Asian Paints, ये टॉप 20 कंपनीज है. ये हम लोग ने लिया है 23 मार्च को. अगर आप ऊपर देखेंगे, मार्केट 7500 का लो बनाया था, तो हम लोग ने 1 साल का लिया डेटा. 25 मार्च को अगर हम लोग इन्वेस्ट करते और 23 मार्च जब बाजार लो बनाया, तो ये टॉप 20 कंपनीज कितना गिरती. सो निफ्टी 33% गिरा था
और ये स्टॉक सिर्फ 8% गिरा है। विकास तुम्हारा कर्सर है वहां पे, विकास, या कैन यू सी Nifty had fallen 33%, but the top quality companies fell 8%. Right now, everybody thinks Reliance is a very very good company, right? Everybody, because अभी वो debt अभी कम किया, अभी पूरा बाजार में अभी सिर्फ Reliance है. But for me, Reliance is a very low quality score because इतना debt है company में, अभी वो debt कम कर रहा है इसलिए better हो, right? So these are the worst companies of India. और सबका myth है ना, अब सब लोग IDBI, अडानी, भारती एयरटेल, टाटा मोटर, 4 स्कोर देंगे, सी द बिजनेस स्कोर, 4, मतलब 5 साल में ना कोई सेल्स ग्रोथ है, ना ROE है, DLF, बैंक ऑफ बड़ौदा, महिंद्रा, PNB, टाटा स्टील, कॉनकोर, हिंडाल्को, all big names, all big names build big businesses. Famous management does not mean that they're doing quality business. Now these companies have been affected by the economy. So you have to find companies which does not get affected by the economy. That is the secret of fundamental analysis. If you invest in company which is affected by the economy, so these companies have been affected by the economy, and these companies fell by 25%. ये 25% ये स्टॉक गिर गई, और अच्छा कंपनी का कितना गिरा? पूरा वर्ल्ड जब 7500 इंडेक्स हुआ था सिर्फ 8% गिरा. So quality companies will always are resilient to falling markets. So whenever you invest in a quality mutual fund, अगर आपको stock quality मालूम है, तो वो mutual funds में भी we are the first ones to launch, and today I'm launching for the first time. और मेरे ऐप में अभी मैंने लॉन्च किया बिकॉज मेरा प्रोग्राम था. हम लोग ने सब जितने म्यूचुअल फंड्स इंडिया में उसका हम लोग वेटेड एवरेज लेके क्वालिटी स्कोर से उसका एक स्कोर बनाया, एंड सरप्राइजिंगली जिस म्यूचुअल फंड्स का क्वालिटी है वही उसी का दाम बढ़ता है सबसे ज्यादा, और जिसका लोएस्ट क्वालिटी है उसका दाम बढ़ता ही नहीं. बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट दैट 5 साल मैं उसका स्टडी करता हूं, हर स्टॉक जो उसके पास है उसका 5 साल का वेटेड एवरेज बना के मैंने एक स्कोर बना दिया हर म्यूचुअल फंड का. सो दिस इज द थिंग. अब मैं आपको मिड कैप में दिखाता हूं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मिड कैप में देखिए ओनली 15% बाजार गिरा है अगर आप क्वालिटी मिड कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो, ओनली 15%. और अगर बैड मिड कैप देखिए, ऑपोजिट करो, नेक्स्ट स्लाइड. बैड मिड कैप फेल बाय 47% इन द सेम टाइम. दैट मीन्स अगर आप क्वालिटी स्कोर में इन्वेस्ट करते हैं तो जब भी बाजार गिरेगा आपका रिस्क फैक्टर विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, इवन इफ यू आर इन्वेस्टेड इन द मिड कैप. एंड दिस इज द सेम स्टोरी इन स्मॉल कैप. आया सबको स्मॉल कैप से जो डर लगता है वो भी इसलिए क्योंकि आप क्वालिटी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करते. अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वालिटी स्मॉल कैप सिर्फ 19% गिरा है. जब मार्केट 7500 हो गया, क्वालिटी स्मॉल कैप ओनली फेल बाय 19%. जब बाजार गिरा है 48% स्मॉल कैप इंडेक्स. और जो खराब स्मॉल कैप्स हैं अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं लोएस्ट में, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, वो 52% गिरा है. So this is the data that if you don't invest in quality businesses, that is why नीलेश शाह भी बोल रहा था buy quality, quality, quality. जब तक आप क्वालिटी बिजनेस नहीं खरीदेंगे, डोंट बाय लार्ज कैप्स, डोंट बाय फेमस नेम्स. फेमस नेम्स डू नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द मार्केट. व्हाट प्रोटेक्ट्स यू इज सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE एंड फ्री कैश फ्लो. ये 4 चीज आर द सीक्रेट of investing in a quality company. So we have made fundamentals so easy that now we can teach people fundamentals in 30 minutes. और कुछ सिखाना नहीं उनको. अगर ये आप कभी इसको फॉलो करें, क्योंकि इतना इजी कर दिया हम लोग ने कि लोगों को लगता है इतना इजी हो सकता है. The answer is yes, fundamentals can be made very very easy for everyone. Okay, so this quality business score is the first part which we show in the app for all the 15 stocks. फिर उस quality business score में भी मैं अपना और एक filter लगा के उसको recommendation देता हूँ. So I do further quality filtering
and give a recommendation. So जैसे आप जाएंगे, because just go to HDFC Bank. Yes. Okay. So नहीं उसमें चला जाए विकास. Go to the page, HDFC Bank page. We have created one page for all the stocks. कि जितना queries है वो एक ही जगह में आंसर हो जाए. If you can decide a good company and a bad company within 2-3 minutes, then you're doing the right thing. Now what we have done is, after the quality business, we have further identified and given a strong buy. So that is the second step. The third step is we also show the valuations of all companies. अगर आप नीचे जाएंगे, we are showing the valuation of all companies. ये देखिए valuation. So it is fairly valued. So our recommended valuation for all the stocks. क्योंकि वो शेयर महंगा है कि सस्ता है वो भी हमें मालूम होना चाहिए. And the fourth thing is, अगर वो strong buy है and fairly valued है तो हम क्या रेट में खरीद सकते हैं. तो हम लोग टेक्निकली वो रेट भी देते हैं. Okay, so you can buy at these rates. We recommend that आप इस भाव में ये शेयर खरीद सकते हैं. Okay, now let's see a company like Tata Motor. अब खराब कंपनी को एक स्टडी करते हैं. TCS is a fantastic company, but Tata देख के सब लेते हैं. Tata Steel ले लो, Tata Motor ले लो. But see, they are in a terrible position. The business quality is extremely bad. Tata Motor. So sell. I have said sell. The business score is 4 out of 22. मतलब last 5 साल में वो ना sales growth कर पा रहा है, ना profit growth कर पा रहा है, ना उसमें ROE है, ना free cash flow है. तो उसकी business की हालत खराब हो रखी है. नाम बहुत बड़ा है. Famous names does not mean. That is why we have given the name Quality Business Score. It is a big brand, but the business is going through a very bad phase. Correct? Now, if you see, we are recommending that at what price can you sell this share also. So what we have done is, we have made a quality business, then we have further filtered it with our recommendation, then we have checked the valuation of the company, and then we have given a price to either buy or sell that stock. I think so. These are the 4 requirements which a person has to decide about a fundamental company and the technical analysis together, and we can decide. Now I only have 12-15 minutes. So I'll show you the mutual fund, what we have done. ये भी ऐप में आ जाएगा हम लोग का पूरे mutual fund, but I'm showing you the data is already ready. Okay, let's go by large caps. Okay, can you tell me your favorite large caps right now? Let me before I show you my data, let's see. We can just make it ready for large cap. Can we get the large caps, your favorite large caps right now? Mutual fund large caps. Can you please suggest? Axis Blue Chip, okay, HDFC top 100. Paresh, my worst performances. So, Mire, Axis Blue Chip, SBI, Mire, Mahindra Blue Chip, ICICI Blue Chip, Frontline. Okay, so I'll show you. What is the data saying? Which large cap company has the best quality stocks and which has the highest quality score and returns. पहले विकास पहले इसको उससे लगा देते हैं पहले 1000 करोड़ के ऊपर कर लेते हैं net asset. Let's take a net asset greater than 1000 crores. Vikas, 1000 crore please. Yes, done. 11. Vikas, yeah, done now. Okay, so Axis Blue Chip has the highest score, and that is why it is performing continuously. Right? It has the highest QBS score. Iska jo quality of stocks hai wo highest hai. That is why it is performing the best. The second highest quality score is Kotak Blue Chip. फिर UTI है, फिर SBI है, फिर Mire है. But they are very close. But what are the bad ones? Obviously, HDFC top 100 is the worst one. That is why there is no performance of HDFC Bank. It is still minus in the last 1 year. 6% minus. Because the quality is very bad.
So we will be ranking all the companies from the quality business. मतलब इसमें क्या किया हुआ है फिर मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा इसका ये show the quality Axis blue chip में जा विकास उसका पूरा stock holding दिखा. We are the first ones to launch only the score as per the holding of the company, which nobody has done it till now, which we are launching on the app, so that you can know what are the good companies as per the stock quality. किसमें sales growth है, किसमें profit growth है. सिर्फ Axis blue chip का all the stocks दिखा दो. Axis blue chip. Yeah. I have the holding for all the data in 5 years. That is the kind of work we have done, fundamental analysis of all the stock holding for all the companies. So if you see, this is the Axis blue chip. This is his thing. उसको विकास दिखा दे कितना percentage है, उसका कैसे करते हैं पूरा. ये रहा. Highest से लगा दो. Highest. So we do weighted average as per the value holding. Right? So अगर आप देखेंगे highest है HDFC Bank 9.93 विकास मार्क कर देना तो ऊपर का दिख नहीं रहा. राइट. या अभी ठीक 9.93%. तो मैं 9.93% का टोटल होल्डिंग में उसको 19 मिलेगा. देन इनफी इज आल्सो वेरी हाई. तो उसका वेटेज हम लोग यहाँ पर देते हैं जितना उसका परसेंटेज का वेटेज है और उसके हिसाब से जितना उसका होल्डिंग है उसका वेटेज दे के और उसका क्वालिटी स्कोर करके एवरेज वेटेड क्वालिटी स्कोर निकालते हैं. ओके. और उससे हमको मालूम पड़ता है कि उसके पूरे फंड का quality score क्या है, which will be launching every 20th of every month in the app for all the mutual funds. क्योंकि 15 तारीख तक सबका स्टॉक होल्डिंग आ जाता है, राइट. एंड 20 तारीख तक हम लोग सबका लॉन्च कर देंगे. सो जो कंपनीज लास्ट 3 महीना 4 महीना में अपना क्वालिटी मेंटेन किया है, those are the companies which will continue to do well in future. We have already checked it. हम लोग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से ऑलरेडी चेक किए थे. विकास वो दिखा दे परसेंटेज जो हर्षल बनाया था कि टॉप पे लगाते हैं तो प्लस होता है और बॉटम में लगाते हैं तो माइनस होता है. या सो रैंकिंग मिल जाएगा क्वालिटी स्कोर से कि किसमें रुपया लगाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द और यूजुअली दे डोंट सेल द शेयर वेरी गुड. सो अगर क्वालिटी खराब है उसके पूरा पोर्टफोलियो का, वो आपको कभी भी रिटर्न नहीं देगा. दे विल नेवर गिव यू रिटर्न. और जब बाजार गिरेगा और सबसे ज्यादा गिरेगा वो सब शेयर, और जब बाजार बढ़ेगा जब भी वो बाजार बढ़ेगा नहीं. एंड क्वालिटी बिजनेस में क्या फायदा है, जब बाजार बढ़ता है वो शेयर सबसे ज्यादा बढ़ती है और जब बाजार गिरता है वो शेयर सबसे कम गिरती है. विकास, कैन यू शो क्वालिटी नाउ? Showing. So this is the first time nobody has launched this. Nobody has even tried to do this. We are very happy to launch it. I was making it ready बहुत जल्दी से कि आज फर्स्ट जी का नवरात्रा भी है और आज कनक जी बुला रहे थे तो मैं सोचा आज ही हम लोग लॉन्च करेंगे. ऑलरेडी ऐप में आ चुका है बाय द वे. वी हैव लॉन्च्ड इट टुडे ओनली. फर्स्ट टाइम तो हम लोग ने सब हटा दिया, वो रेशियोज देखना, वो देखना, क्वालिटी ऑफ स्टॉक ही देख लिया अगर 5 साल का उसका, तो आपको मालूम है कि वो कंपनी अच्छा करेगा कि नहीं करेगा. So I think so. Axis blue chip, I got few names. I'm very happy that you are picking. You are invested in the right mutual fund. Whoever said Axis blue chip, and that is why it is the best performing fund in the last 2 years. App name is valuestocks.in. Show any worst fund performance. Here we are showing you. आप दिखता रिटर्न देखेंगे, ये देखिए सर, ये हम लोग ने QBS बनाया था. तो टॉप 10 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, ये लास्ट 1 साल का डेटा है, अगर मैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं उसका रिटर्न 5% है, और बॉटम 10 का QBS में इन्वेस्ट करता हूं उसका रिटर्न 1%. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4%. मल्टी कैप में अगर टॉप 10 QBS में इन्वेस्ट करते हैं तो 16% रिटर्न है और बॉटम 10 में करते हैं तो 9%. राइट. सो ऑब्वियसली बाजार बढ़ेगा तो सभी बढ़ेगा, बट जो जिसका क्वालिटी बिजनेस होगा वो डेफिनेटली ज्यादा बढ़ेगा और वो कम गिरेगा बाजार. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक क्वालिटी ऑफ द कंपनी विच दे आर इन्वेस्टेड इन फ्रॉम द 4 पैरामीटर्स.
तो सब में हम लोग ने देखा, तो जिसमें क्वालिटी है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. Okay, let me take small cap. Which fund do you think is the best small cap fund? I'll give you a name because people are very rarely invested. मैं अभी बताता हूँ that is going to be the top fund. Okay, DSP, Axis, HDFC. Sir, HDFC is the worst performing mutual fund. जब से mutual fund आया है, it is the worst performing mutual fund. उससे निकल जाना चाहिए. Sorry to give my view. Worst performing mutual fund है और उसके सबका quality खराब है. So if you are invested in HDFC, that is the worst one. Okay, so I'll show you. एक भी नाम नहीं आया, but मैं आपको दिखाता हूँ which one is going to be the best and why it will be the best. उसका भी reason देता हूँ. टॉप से कर देगा. Okay, so please make a note on Carana, Robeco and Union Small Cap. These are the two funds I'm telling you, friends, which is going to do very well. Why? Because Vinay Pahadia has just joined Union Small Bank, and the quality is improved, is tremendous. Already the fund is rising of Vinay Pahadia and बहुत जोर से बढ़ा रहे हैं विनय पाड़े जी. विनय पाड़े का मैं आपको डेटा दिखाता हूं. Who is the best mutual fund manager? उसने 90% टाइम मार्केट को बीट किया है. Okay, 10 out of 9 times. He is the highest, he is the top fund manager in the country who beats the market by 90% of time. He is the fund manager of Union Small Cap. उसने बहुत quality चीज की है. So basically in mutual fund, you have to see the quality and you have to see the mutual fund manager. अगर आप ये दो correct कर लेते हैं, you will be able to predict the best mutual funds. So I'm taking a call on Union Small Cap and we'll talk after a year on 15th October 2021. So I'm taking a call on because abhi, I don't think so anybody BOXAV hai, you know. So these are the best funds and the worst funds क्या है नीचे देख लीजिए. Quant, Tata, Sundaram, IDFC, SBI, these are the worst fund नीचे में. So we'll be ranking the funds accordingly और हम लोग और testing कर रहे हैं so that we can do further things. So please invest in quality business company. जिसका quality business सबसे highest होगा वही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा. अगर आपको आप यहाँ पर 500 करोड़ के ऊपर करना है या 250 करोड़ के ऊपर कर दो विकास, जस्ट मेक इट 250 करोड़ के ऊपर. So then Canada, Union, अगर आपको ज्यादा और ऊपर जाना है 1000 करोड़ के ऊपर जाना है, so then obviously it comes to Access Small Cap. Okay, so but you can also decide कि अपने आपको किस लेवल के ऊपर जाके नेट एसेट के ऊपर डालना है. बट द क्वालिटी बिजनेस स्कोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये उसका फंडामेंटल बताता है कि वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो, और मैं देखा हूं जितने अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं उनका सबका क्वालिटी स्कोर हाई है बिकॉज दे अंडरस्टैंड क्वालिटी कंपनीज. दे फॉलो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE एंड फ्री कैश फ्लो. और जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं बन गए हैं बट दे डोंट हैव दिस बेसिक नॉलेज, उनके स्कोर हरदम नीचे रहती है. तो भी आपको पोर्टफोलियो से मालूम पड़ जाएगा that they are not following the principles of profit growth and sales growth. अगर वो कंपनी वो कंपनी उठा रहा है जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ ही नहीं है, so definitely those stocks will not do well. Okay, so it's 5 o'clock. My time was till 5 o'clock. Kanak ji, I can, if you allow, 2-3 questions ले लेते हैं. If somebody has 2-3 questions, and then I can wrap up. और भी बहुत सारा चीज था बट टाइम बहुत शॉर्ट है तो ज्यादा और शेयर नहीं कर पा रहे. We started. I have to wrap up. We started at 5:10 with you, so another 10 minutes, 15 minutes we can have 10 minutes more. So I can continue. Yeah, okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you so much. So basically, this is the thing. If you quickly 1 or 2 questions so that I know we are on the same page. I hope you're liking the research or the data which we are showing. Anybody has any questions?
more on fund manager selection. Okay, fund manager selection. Okay, what about 3 year? सर मैंने देखा मेरा जो किसी ने पूछा 3 year performance, मैं 5 साल का डेटा देख ही रहा हूँ. I am seeing 5 year data in the stock. तो मैं 5 साल का डेटा देख ही रहा हूँ उसमें, तो ऑटोमेटिक 5 साल हो गए. Are you able to understand, friends? We are seeing 5 year data of the stocks. So we are already seeing 5 year fundamentals of the stocks. So it is already 5 year. विकास की बात नहीं करते ना क्या है इसमें? हाँ. Is there a do you have debt? Yeah, we have debt analysis also. Is there a technical study on MF schemes? What is the meaning of technical study, Mr. George? I am not seeing any return right now. Mr. Rajesh Kumar, मैं return देख ही नहीं रहा हूँ. Return तो past है. मैं देख रहा हूँ अगर quality company है तो वो future में अच्छा करेगा. मैं तो return देख ही नहीं रहा हूँ. But ये मैंने prove कर दिया है. मैंने अपना back किया है कि जो company में quality है वही उसी का mutual fund return है. So I'm not focusing on the return. I'm focusing on the quality of the stock holding of the manager. Mid cap scheme. Okay, let's go to mid cap scheme. Somebody interested in the mid cap scheme. And our app comes with the learning. So मैं सबका learning में देता हूँ. App तो ले लीजिए, but learning भी हम लोग देते हैं उसका. Okay, mid cap schemes. So I'll show you. अभी हम लोग एक नया चीज कर रहे थे. अभी हम लोग उसको टेस्टिंग कर रहे हैं. So but I want to show you one चीज जो हमको अभी अच्छा लग रहा है. Just put विकास top जो अभी तक हम लोग ट्राई कर रहे हैं, but I'm just showing it to you. इसको top 5 कर विकास. Top 5. This is probably will be successful, but ये टेस्टिंग में है. We do a lot of artificial testing of future. ये top 5 मैंने QBS लिया. अब मैं 6 month और 1 year रिटर्न लेता हूँ. Top 5. Because quality is very important. Quality is very important. It is just 5,000 rupees. अभी मैं मार्केटिंग करने नहीं आया हूं सर. आप देखेंगे कि you will automatically come that which company, अगर आपको फिर यहाँ पर करना है which company, so UTI mid cap also might do very well. Okay, so ये अभी हम लोग की टेस्टिंग फेज में है. मैं अभी इसको लॉन्च आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्वालिटी देखिए, क्वालिटी से आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा फंड अच्छा करेगा. तो आई विल बी गिविंग यू क्वालिटी स्कोर ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि उन लोग के जो स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं ना, एंड रिजल्ट्स आती रहती है. तो व्हेन वी अपग्रेड क्वालिटी स्कोर में करंट क्वार्टर का रिजल्ट्स भी अपडेट हो जाते हैं. सो करंट क्वार्टर रिजल्ट्स प्लस द थिंग, देन यू गेट इट. जिस फंड्स ने 15 साल तक रिटर्न दिया तो नेक्स्ट 15 साल नहीं देगा. ध्रुव जी, मैं तो हर महीना को स्टॉक का क्वालिटी देख रहा हूं. तो अगर उसका स्टॉक का क्वालिटी घट जाएगा तो मुझे मालूम है मुझे अब उस पर पैसा नहीं लगाना है. राइट? So I will check अगर if he is maintaining its stock quality QBS score for 3 months to 5 months, I will continue to invest in that company. जहां उस क्वालिटी स्कोर घटेगा फिर मैं आगे उसमें पैसा नहीं लगाऊंगा. So it is going through more testing, but already it is doing very, very well. Debt का अभी तक हम लोग ने QBS score नहीं बनाया है, समीर जी. We have not made a debt का QBS score right now, but we have made another thing in debt, जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ because time short है आज. तो मेरा QBS का अलग नहीं है. No, you don't need to rebalance the portfolio. We will give you the stock which is doing the last 3 months, पंकज जी, कि last 3-4 महीना में जिसका स्कोर अच्छा है. तो बहुत सारे कंपनी का 6 महीना स्कोर अच्छा है. लाइक एक्सिस ब्लू चिप अगर आप देखेंगे लास्ट 2.5 साल से नंबर 1 स्कोर में है और नंबर 1 परफॉर्मर है. तो जब तक वो स्कोर उसका हाईएस्ट है हम लोग उसी में इन्वेस्ट करते रहेंगे. जब तक उसका क्वालिटी स्कोर नहीं घटेगा वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट. So there are mutual fund managers who are maintaining the quality of stocks for 2 to 3 years.
So till the time the mutual fund manager is managing, we will keep on investing in that company. Okay, so we are more into equity mutual funds. So which score you recommend, Paresh? Which score will you recommend? Vikas, एक बार दिखाए. The highest QBS score is the best company. उसमें आप फिर 2-3 चीज ऐड कर दीजिए जो मैं अभी टेस्टिंग में है. हाईएस्ट क्यूबीएस स्कोर के साथ आप एक फंड मैनेजर ऐड कर लीजिए. विकास वो फंड मैनेजर का डेटा दिखा देना. हाँ. I'll show you the fund manager data also. इसका अगर आपको पिक्चर लेना ले लीजिए. तो यू नो हु आर द टॉप फंड मैनेजर्स. तो ये विनय पाड़िया इज द नंबर 1 मैनेजर. लास्ट 10 साल में 9 साल उन्होंने निफ्टी को बीट किया है. सेकंड इज जिनेश गोपानी, एक्सेस. हर्षा उपाध्याय, आर श्रीनिवासन, श्रेयास देवालकर, अमित गणतंत्रा, राजीव ठक्कर, रौनक ओनकार, ताहिर बादशाह, गोपाल अग्रवाल. दीज आर द टॉप गाइज. नीलेश सुराना. तो इसका एक फोटो ले लीजिए आप. who beats the market 70% of the time. So अगर वो QBS स्कोर हाई है और अगर फंड मैनेजर ये इनमें से कोई है, आप समझ लीजिए you are sure that will make that fund manager. Never invest in funds, invest in a fund manager. क्योंकि फंड मैनेजर ही स्टॉक का, उसको मालूम है स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम उसका किसका बहुत रोबस्ट है, और जिसका स्टॉक सिलेक्शन रोबस्ट होगा वही होगा. So quality score with the right fund manager is the ultimate thing to get the best funds. You will never make mistakes with your customers, right? So if you want, you can take a picture of this, that who are the top fund managers in the last 10 years in the country. They are the top fund managers, right? So इसका अगर quality score है और ये fund manager जो हरदम perform करता है, that means you are in a great stock. आपको रिटर्न्स आप देखेगा उन्हीं का रिटर्न्स, क्योंकि दे आर बीटिंग द मार्केट. तो आप देखेंगे दे आर ऑलवेज इन द टॉप रिटर्न्स बिकॉज दे आर बाइंग क्वालिटी स्टॉक्स. दैट इज द मेन थिंग. ये जो हम लोग बहुत सारा रेशियोज देखते हैं, पी देखते हैं, मैंने बहुत कोशिश किया है फ्रेंड्स, लेकिन मैं बहुत स्ट्रगल किया हूं. बट दिस वाज द थिंग व्हिच वाज गिविंग अ लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा. और आपको हर महीना मिल जाता है कि हर महीना उसका स्टॉक का क्वालिटी खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है. मैंने ये भी नोटिस किया कि जैसे विनय पाड़िया जी निकले, वो जहां यूनियन में आए, यूनियन का क्वालिटी स्कोर अपने आप बेटर होने लगे, क्योंकि ही नोज टू बाय द क्वालिटी स्टॉक्स. तो जो फंड मैनेजर का हिस्ट्री है, वो जैसे फंड मैनेजर ट्रांसफर करता है, आप भी उस फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे. एंड उसका क्वालिटी स्कोर देख लीजिए स्टॉक का, and then you will be hitting the right stock, जिसका आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फंड फ्यूचर में अच्छा करेगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी प्रूव किया है, क्वालिटी कंपनीज का दाम सबसे ज्यादा बढ़ता है और अनक्वालिटी कंपनी का दाम सबसे कम घटता है. तो एज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल, वी हैव अ 4-day प्रोग्राम जिसमें आपको स्टॉक का नॉलेज हम लोग दे देते हैं पूरा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फंड का जो स्टॉक्स है, उसको आप तुरंत समझ सकते हैं ये बंदा का फंड अच्छा है और ये बंदा का फंड खराब है by the QBS score. We just launched the QBS score in the last 15-20 days, and as we have taken it by stride, though many people life has changed because fundamental को नंबर दे देने से बहुत जल्दी लोग सीख सकते हैं, right? So I think so. My time is over. Thank you, Karan ji. Thank you so much. I hope everybody enjoyed the session. थोड़ा टाइम शॉर्ट था, प्रॉब्लम मैं बहुत क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया. Amazing session, Shailesh ji, as usual, and this time again it was really new, a lot of new things. Even I have learned. There is every time a new which is coming from your end, but I think this is really amazing. I will request Vikas to just put his phone number, and Tamal, his office colleague, also to put in the number so that no people connect. प्रतीक का नंबर डाल दे विकास, फ्रेंड्स तो उसमें डाल दे 5-day का प्रोग्राम के बारे में डाल दे. I have a 5-day program, 4-day program which I'm going to launch from 26th. कनक जी ने बहुत लोगों को भेजा है. अगर आप करेंगे तो मैं पूरा आपको समझा दूंगा the stock selection system.
And once you know the QPS score, you can do very well. So just put the number. With the passage of day, I think more and more efficiency in managing things is very, very important. And I'm sure hum log sab with today's session, there will be a lot of learning with all of us. And so you all can connect with Vikas and the team. So thank you very much, Shailesh ji, for your time. For shared the link. मेरा भी number दे दे, मेरा भी number दे दे. Yeah. If you want to contact me also, I'll give you my number. Yeah, it's there in the chat box. So. Okay, thank you, friends. Thank you, Kanakji. Namaste. Some of the very, very helpful people. So thank you, Shailesh ji. This is again an initiative in association with Business Line and Tatwa Talk. And this is like 21 associations of our mutual fund industries from across India. They have participated together and they are actually doing this whole event. So thank you from all of us. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. We have shared the details of program, so I'm again sending that. So friends, let's move forward, and we are there today. Now, two of our volatility coaches now will share certain things. Okay, so just before they begin, I'm just putting another poll for all of you to answer. Okay, this is related connection with gold. Huh? So if you all wish, you can just answer. What is the asset allocation you suggest for gold in the portfolio now? अब शैलेश जी का सेशन देख के गोल्ड में कौन करेगा? गोल्ड में नहीं करना है. फिर भी कुछ लोग करना है. चलो, let's put 5%, 10%, 15%, 20% or whatever. So the idea is whatever the market situation be, asset rebalancing. शैलेश जी का मानना ये है कि अगर आप equity में, if you have decided that you need to put this much in equity, within equity you try to move. If today Access is good, put it in Access. If tomorrow Union is good, you put it to Union. And if today HDFC is not looking good, come out of HDFC. Don't marry a particular stock or neither a particular fund. Just move out of it. That's very important. That's very important. So as we can see, the results, like at this point of time, 41% or 49% of us are thinking that there should be an allocation of 5%. उससे नीचे का allocation मैंने दिया नहीं था, नहीं तो शायद उससे नीचे भी कर देते. So 5% is something which all of us are thinking, and around 40% is thinking 10%. So everybody is now thinking less about gold and more about rest of the things. Okay. Okay, so and one more poll before we move to the next speaker. As a part of your incidental advice, I think incidental advice is very, very important as far as MFD is concerned. So what will you recommend and in which category? A large cap fund, mid cap fund, small cap fund, multi cap fund, or a special situation fund as of now? Okay, because बाकी expert advice तो आपको experts लोगों से लेकर, you will have to create an opinion, you will have to actually do some collaborations, some tie-ups. Maybe in the coming days we will be coming up with sessions wherein how MFDs and RIAs can collaborate and actually create a beautiful synergy for a client. But as of now, as an incidental advice, what is that you are going to suggest to your investors? So we can see around 55-60% of you have actually answered as of now. You just give your incidental advice. The maximum, let's say if you want to put into everything, but still where is the maximum weightage will you give? Large cap, mid cap, small cap. Obviously, after doing that, you will have to do all whatever Shailesh ji was telling. So considering all those things, maybe around 67-70% of you have voted. So let's see the poll results. Almost 36% of us are telling that we will be putting our money into multi-cap equity funds, and 30% tells that it is large cap, and 23% of us are telling that it should be mid cap, and small cap is only 7%, and special situation is 4%. So I think most of us are going for mid cap, and small cap I think still people are not very comfortable and not very keen. So anyways, friends,
let's move further. Thank you, Shailesh ji. Thank you, Vikas, and thank you, Team Dynamic, for coming up with every time something new for us to study and learn and understand, so that we can take that same thing to the investors. I'm sure if all of you have liked, you all can just put yes, like, good session, or whatever it is, maybe few things for Shailesh ji and team. I think because everything, whatever we learned, I think there is that adds a lot of value in our life, in our profession. So if you really like this, you can all just share it in the chat box. Thank you very much. So this is something on the chat box for you, Shailesh ji. Thank you so much again. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, so friends, now let's move, but again to Bihag. Bihag is from Ahmedabad, and myself, Bihag, and Varun. Okay, all of us have also done classes with Shailesh ji. Huh? So Shailesh ji, hum sabke Guruji hain. But again, with the time, everybody is learning, or sab logon ki learning is going to next level, and those learnings can actually be, you can actually make it very, very subtle. And in one area, if you are learning, and if you put more deeper studies, you can share it with a lot of people. So that's the idea, where the community, as a community, what we are doing, if somebody is learning and putting more study and more research on one particular topic, let him share, and let others also learn on certain topics, so that everybody share each other's learning, collaborate, and actually grow in business and also grow in learning. So over to you, Bihar. So you also have a presentation which you can share. Yes, sir. Can I audible? Yes, Bihar. थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे. थैंक यू शैलेश जी कि आपने हमको कैश फ्लो मैनेजमेंट, स्टॉक एनालिसिस और पी के ऊपर आपने लॉकडाउन में जब हमने ये पूरा स्टडी किया, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने पूरा लेसन लिया. तो जब से शैलेश जी का स्टडी किया है, तब से लेके माइंड ओपन हो गया कि नहीं, स्टॉक एनालिसिस एटलीस्ट दिमाग में तो होना चाहिए. भले आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करो ना या करो, बट इट शुड बी knowledgeable, knowledge that has to be taken on stock analysis. So कनक जी ने 10-15 दिन पहले बोला था कि पी के ऊपर आपको कुछ बोलना है, तो पी के ऊपर पूरा मैंने एनालिसिस किया था लॉकडाउन में. तो जस्ट मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रेडी किया है कि पी जस्ट खाली प्राइस के एंगल से मैं बोल रहा हूँ, नॉट ऑन द सेल्स ग्रोथ एंगल, नॉट ऑन अर्निंग ग्रोथ एंगल, जस्ट एज अ पी what happens in the past. Just it is a presentation. There is no any indication that I am giving here on that you should buy or sell at this P. Just you have to see the sales growth. Just you have to see the company's future outlook. Not only the P is the criteria that you can look upon, but P is an important indicator. So that is why I have created wonderful PPT. So just can I share through our desktop? Yes, please do share. So friends, the idea is all of us know, whether it is fundamental analysis or technical analysis or anything in mutual fund, there are so many topics, and each and every topic is very, very vast. Okay, so अगर आपको लगता है कि in one topic you can study, please do study that, and then maybe 10 people getting together, when everybody is staring, no, so everybody will be learning. So that's the whole idea, and that's how Bihag is coming up with this idea of sharing about his PE concept. Over to you. Is it visible, sir? Yes. Yes, so sir, it's all about PE ratio, understanding of PE ratio and its impact on investments, because कोई भी investments करते हैं तो PE ratio देखना जरूरी है. It is not an only indicator, but it is also an important indicator to look upon investments. PE, sir, what is price earning ratio? The price earning ratio is the ratio for valuing a company that measures its current share price relative to its per share earning. The price earning ratio is also sometimes known as the price multiple or the earning multiple.
This is, we know, very simple way, but just is a theoretical perspective. I have shared the theory here. What is the price earning ratio? P ratio. P ratio are used by investor and analyst to determine the relative value of a company's share in apple to apple comparison or its own comparison for the purpose of historical check with the same company, that its earning are going up or down, and with its EPS, and so we can evaluate that that company is overvalued or undervalued. P ratio का formula and calculation. Analyst and investor review a company's P ratio when they determine if the share price accurately represent the projected earnings per share. The formula and calculation used for this process follow. P ratios are market value per share divided by EPS. कंपनी का जो ग्रोथ है इससे डिवाइड करेंगे तो आपका एक पी रेशियो आ जाएगा. टू डिटरमाइन पी वैल्यू वन सिंपली मस्ट डिवाइड द करंट स्टॉक प्राइसेस बाय द अर्निंग पर शेयर ऑफ दैट कंपनी. एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का, दिस इज लाइव एग्जांपल्स एट द प्राइस ऑफ 17 अक्टूबर. रिलायंस का प्राइस है अप्रोक्सीमेट 2175. उसका ईपीएस ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस इज 46.76 एंड 2175 से आप डिवाइड करोगे 46.76 से तो आपका पी रेशियो आएगा 46.5. ट्रेलिंग पी रेशियो सर, द ट्रेलिंग पी relies on the past performance by dividing the current share price by the total EPS earnings over the past 12 months. It is the most popular PE metric because it's the most objective, assuming the company reported earning accurately because this is past. तो का जो भी डेटा है वो एक्यूरेटली बैलेंस शीट में कैप्चर होगा और आपका पी एक्यूरेट पी है वो आपकी बैलेंस शीट में से रिफ्लेक्ट होगा. सो दिस इज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेथड विद द ट्रेलिंग पी मैकेनिज्म. Some investors prefer to look at higher trailing P because they don't trust another individual's earning estimate. But the trailing P also has its share of shortcomings, namely a company's past performance does not signal future behavior. कोई कंपनी का P अगर ज्यादा है तो it doesn't indicate future performance and vice versa. So trailing P is just nothing but only past performance. Now we just move forward. What is Nifty PE ratio? What is current Nifty PE ratio? Nifty 50 PE ratio, because we are normally investing into baskets of mutual fund and that comprises of Nifty 50 stocks or Nifty 100 stocks. So we have to evaluate those PE ratios also. So Nifty 50 is a combination of 50 stocks, diversification across different sectors of the Indian economy as per the percentage allocation from the different sectors and for the different stocks. Nifty 50 index is counted and accordingly the P declared by the NSE Limited according to their weightages and according to their current EPS. Nifty 50 is managed by NSE Indices Limited. अच्छा, Nifty P ratio is important. P ratio क्या देखना जरूरी है, क्या P ratio को नहीं देखना जरूरी है? Yes, P ratio इसीलिए देखना चाहिए कि मार्केट कितनी पीक पे पहुंचा है, कितने वैल्यूएशन पे पहुंचा है, ज्यादा ऊपर है ज्यादा नीचे है, ये देखने के लिए पी रेशियो देखना जरूरी है. पास्ट एग्जांपल में फरवरी 2000, जनवरी 2008, अगस्त 2018, these are the points that Nifty P ratio went overbought levels as per historical data, while in January 99, May 2003, October 2008, Nifty P ratio went below 12 levels, which were highly oversold regions. So these indicates just points of high P and low P, nothing else. Nifty P is ratio important, though no one can predict the top or bottom of the market perfectly, but comparison of the current price, that is EPS, P ratio, PB ratio, dividend yield ratio data with the historical data can be helpful in the analysis process in the investment journey. Those who enter in the stock market at the lower P levels in the right instrument can have good returns over long horizon. From Nifty P ratio historical data chart, you can analyze year 2000, 2008, 20 crash, and you can also track many bull market period from the 20-year plus valuation data available in public domain.
Nifty PE ratio is important. In overvalued levels, smart investors start booking their profits, while at undervalued levels, smart investors start accumulation of the investment process. Though no one can time the market, but given Nifty 50 and Nifty sectoral indices PE ratio, PB ratio, and dividend yield, chart can surely be helpful in throughout investment journey in Indian stock market to get idea about overvaluation or undervaluation of the particular indices, and smart investor can take benefit of it. This is the just heat map of the Nifty 50 that 1999 whole year is low PE regime. 2000 tech bubble is came, so PE went up. Again 2001, 2, 3, 4, 5, 6 all are lower PE regime, and 8, 9, 10, 11 are the high PE regime. So again 2013 अपना फिजिकल डेफिसिट का प्रॉब्लम आया था इंडियन इकोनॉमी में, अर्निंग विजिबिलिटी नहीं थी. मनमोहन सिंह यूपीए 2 गवर्नमेंट का लास्ट ईयर था. 2013 is the low PE regime where there is no outlook on the earnings of the Nifty 50 companies. Same way Narendra Modi government came in 2014. Expectation built up from the market, and PE is going up because price is going up, stock market is going up, so market is heating up. 15, 16, 17 heat map is going red, and again 2020 because of COVID crisis, market went down, and so the PE went down. Right now current PE is roughly around 34. When overall index are at high levels, we are buying basket of shares at higher valuation. This is important slides that we have to understand each and every IFA. Investment returns from different PE levels does matter a lot. When overall index are at high levels, we are buying basket of shares at higher valuation, not single share, not 2 share, not 10 share. We are buying a basket of shares. Remember, my friends, the fund we are selecting has a portfolio of 30, 40 or 50 stocks of the portfolio. So we are buying a basket of shares at higher valuation of the market. Underlying portfolio P also comes with higher multiples because we are following growth strategy, growth investing, not the value investing. So in bull run and in absence of further earning growth outlook, bulk of scripts may go down due to any negative news, like recently COVID has happened. Any negative news to realigning their current earning growth, and so the PE multiples also coming down according to their earning estimates. So market ऊपर जाता है, अगर earning visibility नहीं है तो market has to come down with XYZ reason. Same exactly reverse. Exit opposite side, low valuation. When the overall index are at low levels, we are buying basket of shares at lower valuation with the mutual fund. At lower valuation of the market, underlying portfolio of the PE also comes with low PE multiples. So in bear run, in optimism of future earning growth outlook on positive side, bulk of scripts may go upside due to any positive news to realigning their current earning growth, and so PE multiples also coming up and up according to their positive earning estimates. Stock market में normally we are talking about Nifty PE, but is it important to look upon while we are investing into mutual fund? So this is also important slide. We are buying equity mutual fund at different levels of the market, which consist bulk of scripts investment for the purpose of diversification across sectors from the different parts of index from stock exchanges by the professional fund managers. As it is a diversified equity portfolio, it carries a PE multiple of the portfolio, which is correlated with the index PE. So ideally, when the market is overheated, fund PE is on higher side, and vice versa if the portfolio strategy is growth strategy. Nifty PE ratio in mutual fund is important. So when we are investing at higher multiples of the market, underlying basket of the equity mutual fund also comes with higher PE. And when the P multiples are at lower levels, equity MF also comes with lower PE. Different outcomes at different PE. When we are investing into mutual fund at different interval, in general, higher PE investment in index funds are not generating any extraordinary positive returns over risk-free rate of returns. And at lower PE investment generates extraordinary returns over a period of time.
सो इन नटशेल शैलेश जी ने जैसे बताया कि सेल्स ग्रोथ भी देखना है, कैश फ्लो मैनेजमेंट भी देखना है. सो इन नटशेल P is one of the most important indicator for evaluation of portfolio or index at different cycle of market, and it will be easy to come to an investment or disinvestment conclusion by considering other parameter of the investment analysis with evaluation of the P. Only P may or may not help for any investment or disinvestment ideas. Some facts about Nifty P from 2000 to till date. अपना मार्केट का लॉन्ग टर्म निफ्टी का एवरेज पीए अप्रोक्सीमेटली 20.23, लोएस्ट लेवल ऑफ निफ्टी पीए गॉन बिलो 10.68. currently just few days back it was 34.87. This is the overall 20 years history. Now this history is just shortened, that is from 2008 to 2020. long-term average of the P for this period is 22 approximate. Lowest level of the Nifty P is 10.68 and highest level of Nifty P is 34.87. This period again I have shortened, that is from 2015 to 2020, because we are seeing from the fund managers interview that Indian economy is matured now, so old PE regime will maybe break, or new PE may re-enter into the stock market, because of India is a premium market to the global investors. So from 15 to 20, long-term average of the Nifty P is 25 for these 5 years. Lowest level of Nifty P, that is COVID level, that is 17.15. Highest level of Nifty P is approximately 35, that is quoting right now. So इतना P का बात हो गया. अभी क्या हाई P पे निफ्टी ने रिटर्न्स दिए हैं? जस्ट वी हैव लुक अपॉन दैट दिस थिंग that from 1st January 2000 to till date 17th October 2020, if somebody is invested into index fund that is called Nifty at 11th February 2000, 14th February 2000, January 2008, this 6 incident as I have taken, where the P of the Nifty is above 28 and the client is waiting to getting the returns from the Nifty companies. So client is waiting for 5 years, 6 years, 7 years from that date, 8 year, 9 year, 10 year, 12 year, and till date. He is waiting till date. So all these returns, slide is visible. Hello, slide is visible. Yes, absolutely. So these all the returns that in 8-year period, that is 2008 bubble, client is generating 13% kind of return, and 2007 before Lehman crisis has happened, client is generating 13% kind of return. Rest all the period are near to risk-free rate of returns or negative returns. You can find that higher P investment does not give any surety or probability, high probability to getting positive returns. Again, example of 2018. This is the Nifty investments, that is index fund investments. 2018 is the year of higher B regime. So I have selected few datas of the 18 that has higher B of 28. Client is waiting for 1 month, 2 month, 3, 6, 9, 12 month, 18 month, 2 year and till date investments. All the investments you can find that risk-free rate of return to generate from this kind of market is very, very tough. So you invest and forgot for 2 years, 2.5 years is a risky call at higher B. So this is my conclusion, my personal conclusion. You can find many incident of negative returns also, and you can find a positive return approximately 5% positive, not more than that. That is in 18-month category. Falls on 27 July, first row, you can find here 5%. So nothing can be generated from this kind of P at index point of view. I am talking about index, not the stock portfolio level. Next slide. Nifty returns outcome at lower P multiples investments. So if the Nifty P is lower and if you are investing and you are waiting for long, then result may change.
in front of you 6 years, 7 year, 8, 9, 10, 12 year and till date returns are there. And these are the Nifty dates that investment has happened with different Nifty levels, with different Nifty PE levels. So you can find 16% at the 6-year level, 17% on 8-year category, first row, 17% kind of returns. Then if you go below, that is 2006 or 7 level, the return is just diminishing. Return is gradually going down because Nifty has higher earnings from the 2000 level, but Nifty has not high growth on their earnings from the 2006 and 7 levels. So at that point, returns are not extraordinary. And first 4 years, that is 2001, 2, 3, 4 returns are looking attractive on a CAGR basis. Now we have talked about index fund. Now I have taken some few large cap, active large cap funds with the help of the fund manager. Can we make money with the active large cap funds with the help of the fund manager by giving a decent time to the fund manager at higher P levels? So these are the slide. This is the slide. When the client is investing in 2000 with XYZ large cap fund. So first blue annualized return is actually Nifty returns. I have forgot to mention there. Second one is large cap fund 1. Third is large cap fund 2. Fourth is large cap fund 3. And fifth is large cap fund 4. These are the genuine large cap fund returns for this period of time. So in 2000, Nifty has generated 9% return. Large cap 1 has generated 16% return. So this is that is a positive alpha over index. 13%, 12% and 10% alpha over index. So each and every fund is performing over a long period of time. But as the time passes and time shortened, and if you came with the tenure of July 2018, then fund manager cannot beat index fund, Nifty fund with a short period of time with a decent margin. So few funds are negative compared to index, and index is also not generating any decent return with a short period of time. You can take an example of 2008 also. Nifty has given a 5% kind of return, while the fund is giving CAGR return of 6%, 5% and 6%. So risk-free rate of return generating with the active fund management with a decent time frame is also different when we are investing at higher PE levels. You don't want to mention the name of the fund 1, 2, No. I do not want to mention any. I don't want to promote or de-promote. Just I want to promote this concept only. Okay. Very good. Nice. Once again, in nutshell, PE is one of the most important indicator for evaluation of portfolio or index at different cycle of the market, and it will be easy to come an investment conclusion by considering other parameter of investment analysis with evaluation of PE. डिस्क्लेमर, ये डेटा खाली देखने के लिए, समझने के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट कंक्लूजन पे आने का लिए नहीं है, अदर पैरामीटर को भी फॉलो करना है, ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिखाने के लिए नहीं है, जस्ट फॉर द इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर फैटर्निटी. थैंक्स. बहुत सुंदर, and I think this was really awesome, Bihag, and I think first time you have presented at Financial Freedom Fraternity Forum, and I'm sure abhi the best is yet to come. But friends, as an MFD, you can do this. This is something which is very, very important. You must have seen Bihag is not talking about any particular fund. He is not talking about anything. He's just talking and he's sharing certain data. So I think aane wale time mein, sir, with this session, it's not only about fundamental analysis. What we really need to learn is, as an MFD, what we really need to do, what incidental advice means. So this is just his learning. As a learning, this is what we all can share. Nobody stops us. It is again about suggesting based on that learning. Okay, and incidental advice. So this is something beautifully you have shared, Bihag, and I think good preparation, good chart work, good data. He has been really working on this for quite some time.
and I think everybody has got really benefited with all of them. So if you all have really liked, maybe you all can share something in the chat box. How did you like, and what is one takeaway which is from Bihag session? Because Bihag has been really seriously worked on this, and it's only about one concept. Okay, and similarly, each one of us should strive to identify something, one unique thing which we all can learn, so that we all can share. If one person is learning about one thing, he can share it. Like I am learning from Bihag, all of us are learning from Bihag. So similar way, all of us can at least learn one topic very deep, and then when we share it, all of us get benefit out of this. Okay, so big applaud to you, Bihag. Thank you so much for your thank you for your session, and I think everybody has got benefited out of it. So again, big applaud to you, Bihag. Thank you for being a speaker at Scale Up Scale 21-week program. Thank you so much. So friends, moving, I think we all are enjoying, and let's have one poll before I invite the next speaker, rather the last speaker for the day today. We'll have a fifth poll today. Okay, but this is again something which is connected with the upcoming sessions. Okay, 1 year down the line, how do you see yourself? MFD, RIA, both MFD and RIA under one company or collaboration. So next few weeks, we will be focusing on the MFD part, RIA part, collaboration part. How is this? How we really need to scale up our skills and our practice from this point. See, learning is very important. Poll is there on your screen, and almost 50% of you have already done the polling. So Mr. Daruwala, if it is not visible, probably you are on your phone. Maybe you'll have to press the right buttons or something like that. So almost 60% of you have voted, and let's, yes, ending the result and sharing it. Okay, so a majority, 61% of us still think that we will continue as an MFD only. And I think only just considering incidental advice, it's a big thing. Some of us think, 2 of us rather in all this group are thinking that they will convert into RIA, and 36% of us think that we will continue to have a combo thing with RIA and FD. MFDs in the coming week, we will have sessions which is connected with this, wherein how we all can do that, how we can actually make it more worthwhile and useful for all of us. So just wait for the sessions. So good to see that. Okay. So now let me invite the last speaker for the day, Varun Mittal. So I think Varun, Bihag, we all of us had a session with Shailesh ji in the February 2019, okay, at Mumbai. And then after that, no, it is so nice to see. And Varun is becoming very popular. His YouTube videos are coming up very nicely. He's sharing stories and concepts. And not only that, he has also presented at some other forums also. His confidence and the way of delivery बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, जो आप लोग सब अभी देखेंगे. और वो शेयर करने जा रहे हैं हमारे संग मार्केट कैपिटलाइजेशंस टू जीडीपी के बारे में, his research, his ideas, and how we can use this part of the study in our business, in our analysis, and in our study. So over to you, Varun. Thank you for joining. Thank you so much, Kanak ji, Bihag, Saraf साहब. आप सभी को सबसे पहले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं. और देखिए, जब भी हम किसी कंसेप्ट की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने स्टॉक पे फंडामेंटल एनालिसिस सुना शैलेश जी का, तो हमें लगा कि यही सब कुछ है, मतलब अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा. अभी पी के बारे में सुना तो ऐसा लगा बस पी अगर एक बार समझ में आ जाए तो पी सब कुछ है, पी से काम बन जाएगा. बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अगर आप रामायण पढ़ें तो आपको लगेगा भगवान राम ही सब कुछ है, गीता पढ़ें तो आपको लगेगा कृष्ण ही सब कुछ है, और आज दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो आपको लगेगा ब्रह्मा विष्णु महेश सब दुर्गा जी के आगे ही हाथ जोड़ के. तो आप जिस फंडामेंटल एनालिसिस को, जिस रेशियो को ध्यान से समझेंगे, आपको लगेगा वो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है.
पर ये बात बिल्कुल आखिरी में डिस्क्लेमर में बिल्कुल ठीक कही गई थी। बिहर साहब ने कहा था कि बाकी चीजें भी ध्यान से देखनी पड़ेंगी। तो मैंने ये जो पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है, एक तो ये बात है कि मैं माफी चाहता हूँ, कुछ मार्केट कैप टू जीडीपी एक्चुअली कई बार और जगह भी बहुत लोगों ने सुना होगा, मेरे से भी कई बार इंटरेक्शन हुआ होगा, तो कुछ चीजें रिपीटेशन हो सकती हैं, तो रिपीटेशन के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पहली बात। दूसरा, इस पूरी प्रेजेंटेशन को मैंने आपके सवालों पर आधारित करके बनाया है। मतलब पूरी प्रेजेंटेशन के एंड में आपके सारे सवालों के जवाब आपको, मेरी उम्मीद है कि आपको मिल जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें जवाब देने के लिए जो सवाल बीच में पूछे जाएं, ठीक है। और अब मैं आपको बहुत सारी, अभी आपने एक्सेल देखी, फिर उसके बाद पीपीटी देखी, और मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को एक्सेल और पीपीटी पे नहीं, आप सिर्फ मेरे पे फोकस करिएगा। बाकी कंसेप्ट समझना है कि ज्यादा टेंशन नहीं है, वो अपन लोग समझ लेंगे। चलिए, मैं फिर भी एक मैंने बिल्कुल रिसेंट अभी पी समझते हुए एक छोटी सी स्लाइड मैंने एक अपनी स्लाइड में ऐड करी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपनी स्लाइड। और एक अच्छी चीज है, आज वरुण गिफ्ट्स भी देने वाले हैं अगर आप उनके सवालों के जवाब दोगे तो। So please keep writing on the chat box. या श्योर मैं बताता हूँ वो क्या है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। या तो गिफ्ट के बारे में बताता हूँ। जो पीपीटी में पूछे गए सवाल हैं, उन सवालों में 10 सबसे पहले जो जवाब आएंगे और कंसिस्टेंसी के साथ वो 3 नाम जो बार बार सही जवाब देंगे, मेरी टीम है वो मैनेज करेगी कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए हैं, और जो सबसे ज्यादा सही जवाब देंगे वो 3 नाम हकदार होंगे एक गिफ्ट के। और वो गिफ्ट है कुछ और नहीं, कनक जैन जी की मैनेज योर फाइनेंस, बिहेव योर फाइनेंस करके जो नई किताब है, अमेज़न से हम लोग वो गिफ्ट डिलीवर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग चैट बॉक्स पे एक्टिव रहेंगे, और इसको मैं आखिरी में अपनी फेसबुक पेज के लाइव पेज पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट रहा है। तो मैं आखिरी में पीपीटी के आखिरी में अपना फेसबुक का पेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी पी के बारे में मैंने बात सुनी, तो पी एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखिए, ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये पीई है, और ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये है अर्निंग पर शेयर। अब इसको फटाफट समझते हैं, क्योंकि ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, मेरे को तो मार्केट कैप टू जीडीपी पे जाना है, पर ये मुझे बड़ा मजेदार लगा पिछली वाली प्रेजेंटेशन को सुनते हुए। हम सिर्फ पी अकेला ना देखें, पी के साथ हम ईपीएस भी देखें। ईपीएस क्या है? अर्निंग प्राइस पर शेयर। अब देखिए, अर्निंग पर शेयर, अब पीई को समझिए खर्चा, पीई है खर्चा और ईपीएस है आमदनी। ध्यान से समझिएगा, पीई है खर्चा। मान लीजिए 2020 में कोई व्यक्ति उतना कमाता है जितना 2013 में कमाता था, ये है आपका ईपीएस। देखिए गिर गया है, ये ईपीएस उतना हो गया है जितना 2013 में था। 7 साल पहले की अर्निंग्स पर कंपनीज के शेयर्स पहुंच चुके हैं, और खर्चा यानी पी देखिए अब तक के पीक पर पहुंच गया है। तो अगर खर्चा ऊपर होगा और आमदनी नीचे होगी तो क्या करना पड़ेगा? या तो खर्चा नीचे करना पड़ेगा या आमदनी ऊपर करनी पड़ेगी। अब आने वाले समय में देखिए कि क्या होता है, खर्चा नीचे होता है या आमदनी ऊपर होता है, ये देखने वाला विषय रहेगा। पर मैं इस पे अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछले स्पीकर बहुत अच्छा बता करके गए हैं। मैं अब आता हूं अपनी आज की प्रेजेंटेशन पर। देखिए, मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन 3 हिस्सों में डिवाइड करी है। पहला हिस्सा है ज्ञान का। ज्ञान क्या है? अगर मैं जीडीपी, मार्केट कैप टू जीडीपी की बात करूं तो ज्ञान है फॉर्मूला। और फॉर्मूला किसका है? इस यहां पर हिंदी वाला, ठीक है ना। फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट्स के भगवान वॉरेन बफेट साहब का। और दूसरा सेशन का दूसरा पार्ट है बोध। बोध देखिए क्या होता है कि बोध अपना अपना होता है। एक ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उस ज्ञान से मुझे कुछ जानकारी मिली और उसका मैंने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया। अब यही जानकारी मैं आपको दूंगा, आपको एक ज्ञान दूंगा। ये ज्ञान हो सकता है आपके पास पहले से भी हो,
इस ज्ञान को जब आप मनन करेंगे तो आपका अपना इंटरप्रिटेशन होगा, अपना बोध होगा। तो मेरा ज्ञान, मेरा बोध आपके बोध से अलग हो सकता है। तीसरा, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और बोध मिल जाता है तो हमें मुक्ति मिलती है। तो तीसरा पार्ट रहेगा मुक्ति का। मुक्ति क्या है? उसमें हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले ज्ञान शुरू करते हैं। अच्छा सॉरी, ज्ञान शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ना भगवान ने एक दिव्य शक्ति दी है और वो है डेटा एनालिसिस करने की। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना जो पीपीटी शेयर करूंगा उसके आंसर्स ना ABC तीन के अंदर देने हैं। मतलब कोई स्पेलिंग का कोई इश्यू नहीं है, आपको सिर्फ A, B और C लिखना है। सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं। और पहला सवाल है डेटा एनालिसिस को लेकर के, पहला और दूसरा सवाल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल पहले मैं बोल रहा हूं, कहीं आप जल्दी जल्दी जवाब ना देने लगे, इसीलिए। सवाल ये है कि एक बच्चा जो 5th क्लास में पढ़ता था, जो 5th क्लास में पढ़ता था, 4th क्लास में पढ़ता था, उसके 92% नंबर आते हैं 4th क्लास में। 5th क्लास में 94% नंबर आते हैं। 6th क्लास में 96% नंबर आते हैं। अब आपको चैट बॉक्स पर लिख के बताना है कि उसके 8th क्लास में कितने नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। पहले 10 सवालों के जवाब। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूं, ये एक अलग बात है। तो जल्दी हम लोग चैट बॉक्स को साइड करके दोबारा से कंसेप्ट पे आ जाएंगे। अब देखिए, सवाल यही है, दूसरा सवाल भी यही है, ध्यान से सुनिएगा। पहले सवाल का क्या जवाब दिया आप लोगों ने मुझे नहीं पता, पर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने C दिया होगा, ज्यादातर लोगों ने। पर ध्यान से सुनिए, सवाल वही है, अब मैं जवाब बदल रहा हूं। और ध्यान से सुनिएगा सवाल एक बार फिर से। 5th क्लास में, 4th क्लास में एक बच्चे के 92% नंबर आते हैं, उसी बच्चे के 5th में 94 आते हैं और 6th में उसके 96% आते हैं। आपको बताना है कि 8th क्लास में उसके कितने नंबर आते हैं। ऑप्शन A 92, 80 to 90, 91 to 95, 96 to 100। C, B, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा। अब देखिए, सवाल करने का कारण यही था, उस बच्चे के सब लोगों का कंसेप्ट क्लियर था पहले सवाल में कि C ही आएगा, और जैसे ही सवाल में ऑप्शंस चेंज करे गए, आपको B और C में कंफ्यूजन हो गया। इसका क्या कारण है? ये सवाल इसमें क्यों रखा गया? देखिए, ये सवाल इसलिए रखा गया क्योंकि जब भी हम कोई डेटा एनालिसिस करते हैं तो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस डेटा को मैं कितनी दूर से देखूं कि वो सही दिखाई दे। अगर मैं उस डेटा को बहुत करीब से देखने की कोशिश करूंगा तो वो पास से पढ़ी हुई किताब की तरह हो जाएगा, और उसे अगर मैं बहुत दूर से एनालाइज करने की कोशिश करूंगा तो भी वो गलत हो जाएगा। तो वो दूरी सही होनी चाहिए। तो मार्केट कैप टू जीडीपी को जांचने की जो सही दूरी, मैंने बार बार एक टूल बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस टूल पर मैंने उस मार्केट कैप टू जीडीपी के रेशियो को रन किया, क्वार्टरली गलत आया, एनुअली गलत आया, 2 साल में गलत आया, 5 साल में हर बार सही आया, 10 साल में हर बार सही आया। फिर मैंने उसे रन किया 3 साल में। 3 साल में 80%, 70% चांसेस ऐसे रहे कि वो सही आया, 30%, 20% चांसेस ऐसे रहे कि वो गलत आया। तो मुझे समझ में आया कि अगर 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स पर मार्केट कैप टू जीडीपी को बार बार रन किया जाए और मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाए, विद द डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि एक पाप है, मार्केट को प्रेडिक्ट करना एक पाप है। फिर भी क्योंकि ये जो टूल है, ये जो फॉर्मूला है, ये भगवान का दिया हुआ फॉर्मूला है, और भगवान कौन है? वॉरेन बफेट साहब, उनका दिया हुआ फॉर्मूला है। मैंने सिर्फ उसको एक टूल पे रन किया है, तो वो रन किया हुआ फॉर्मूला और मेरी ऑब्जर्वेशन, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि हम 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स पर डेटा को क्यों एनालाइज करेंगे। चलिए, अगला आपके सामने पीपीटी आ रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें 2 ग्राफ हैं। एक ग्राफ है ब्लू कलर का, दूसरा ग्राफ है पर्पल कलर का। जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन
आप लोगों के लिए अगला सवाल है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ये जो बीच में से एक पर्पल कलर की लाइन जा रही है वो क्या है? अगर मैं मार्केट कैप टू जीडीपी की बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये पर्पल कलर की लाइन क्या हो सकती है? ये पीई हो सकता है, ये ईपीएस हो सकता है, या फिर ये जीडीपी हो सकता है। ए बी सी। बहुत बढ़िया। तो ज्यादातर लोग समझ ही गए हैं कि ये जीडीपी है। पर्पल कलर की लाइन जो है, जो बीच में से जा रही है, ये जीडीपी है। और ये जीडीपी जो है वो मार्केट कैप का मीन है। मीन यानी एवरेज, यानी मार्केट किसके आसपास घूमती है? मार्केट घूमती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन घूमता है जीडीपी के आसपास। ठीक है। अब आप लोगों से अगला सवाल है, अगला सवाल ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जब बढ़ी हुई है तब इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा समय है, या फिर जब वो मीन पे है तब अच्छा समय है, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन जब नीचे है बिल्कुल बॉटम में तब अच्छा समय है? सवाल जवाब, ब्लैक सर्कल, ब्लू सर्कल या फिर रेड सर्कल? बहुत ही बढ़िया, लगभग सभी लोगों का जवाब है रेड सर्कल यानी सी। देखिए क्यों हुआ, जब हम फॉर्मूला समझते हैं तो फॉर्मूला ना सबको एक जैसा समझ में आता है। जब फॉर्मूला समझते हैं तो फॉर्मूला सबको एक जैसा समझ में आता है। जब सबको एक जैसी बात समझ में आती है ना तो सबके जवाब एक जैसे होते हैं, क्योंकि अभी ज्ञान चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अब इसके बाद बोध चलेगा, फिर कंफ्यूजन आएगी और मजा आएगा। ठीक है, तो आपने मार्केट कैप समझा। अब जरा फटाफट शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू करंट प्राइस, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, ट्रेडेबल, ध्यान रखिएगा, ट्रेडेबल शेयर, जो प्रमोटर्स के पास लॉक पड़े शेयर हैं वो नहीं, जो ट्रेडेबल शेयर हैं उनको जब आप प्राइस से, उस करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है। फटाफट जीडीपी देख लेते हैं। जीडीपी क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी और मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने समझ लिया। अब इसको फटाफट एक टूल में डालते हैं, और ये टूल है बोध, जो कि मेरा बनाया हुआ है विद ऑल डिस्क्लेमर जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। और अब इसको देखते हैं एक्सेल के थ्रू। बहुत ज्यादा एक्सेल पे समय नहीं लगाएंगे, सब कुछ रेडीमेड है, समझते चले जाएंगे। और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो अपन लोग लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूं, तो चैट बॉक्स पे इस समय सवाल लिखने का कोई माफ कीजिएगा, कोई अभी मतलब नहीं बनेगा। तो आप सिर्फ अभी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, अपन लोग बाद में जो है क्वेश्चंस लेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को एक्सेल शीट दिखाई दे रही होगी, राइट? अब देखिए, अब ये जो डेटा है, जो आपको ब्लू कलर का एक स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें डेटा दिखाई दे रहा है, ये जो डेटा है इस पे कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये सारा डेटा बीएससी और आरबीआई की वेबसाइट से निकाला गया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। यहाँ सबसे पहले कॉलम में दिया गया है मंथ एंड ईयर, दूसरे कॉलम में दिया गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको हमने अभी अभी समझा था, तीसरे कॉलम में दिया गया है जीडीपी जिसको हमने अभी अभी समझा था। जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी कर देते हैं तो एक सर्टेन परसेंटेज निकल करके आती है। उस परसेंटेज को जब हम माइनस कर देते हैं 100 से, तो ये 100 क्या है? ये 100 है मीन। ये वो लाइन है जो इंडिया के लिए सही है, ऑस्ट्रेलिया के लिए 140 और यूएस के लिए 160 हो सकती है। इंडिया के लिए लगभग 100 के आसपास का मीन सेट किया गया है। तो उसको क्या करेंगे, फिर से दोबारा समझते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी माइनस 100, तो जो अगर वो प्लस में निकल करके आया, अगर फिगर जो निकल के आई वो प्लस में है, अगर प्लस में तो आपने क्या कहा था, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर है और ये इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे समय नहीं है। और अगर वो माइनस में है तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे और ये इन्वेस्ट करने के लिए बेहतरीन समय है। तो इसी फॉर्मूले पे पूरा टूल बेस्ड है। बस आप ये देखते जाइए कि कब प्लस है और कब माइनस है, और मजेदार चीजें आप लोगों के सामने आती जाएंगी। देखिए, सबसे पहले यहां पर डालेंगे मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? 71 लाख करोड़, और जीडीपी क्या है? 53 लाख करोड़। मार्केट कैप टू जीडीपी कितना आ गया? 134। 134 क्या बोला था? 134 माइनस 100 इज इक्वल टू 34। अगर 34 है
तो सेंसेक्स क्या था? सेंसेक्स था हमारा 20,286 और रिटर्न्स कितनी आई 3 सालों की? -1%। तो सेंसेक्स कहां पहुंचा 3 सालों में? 19,500, 19,600। हमारा टूल बता रहा है 100, 200, 500 पॉइंट का हेरफेर ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं 2019, 36 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जीडीपी 59 लाख करोड़, मार्केट कैप टू जीडीपी -100 किया तो आया 39। उस समय का सेंसेक्स क्या था? सेंसेक्स मार्च 2019 का सेंसेक्स था 9708 और रिटर्न्स कितनी आई? 22%। 22% रिटर्न्स क्यों आई? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे था। और आप याद करिए आपने क्या कहा था? मार्केट कैपिटलाइजेशन जब भी नीचे होगा तो आने वाले 3 सालों के रिटर्न पॉजिटिव होगी। और कितनी पॉजिटिव हुई? 22%। ठीक है, अब देखिए 2007 के बाद 2010 रोलिंग रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, 71 लाख करोड़ और जीडीपी 70 लाख करोड़, मार्केट कैप टू जीडीपी 101, 101 और माइनस किससे करना है? 100 से, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मार्केट कैप टू जीडीपी कहां आ गई है? मीन पर आ गई है। अगर ये मीन पर आ गई है तो इसका मतलब आने वाले 3 सालों के रिटर्न्स फ्लैट रहेंगी। तो देखें कितनी रही। सेंसेक्स था हमारा 20032 और रिटर्न आई हमको -2%। सेंसेक्स पहुंचना चाहिए 18,000, बिल्कुल 18,800, 18,700। मार्केट कैप टू जीडीपी फिर से करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मैं बार बार क्यों कर रहा हूं? मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं जिससे कि ओ माय गॉड, आप लोगों ने आंसर तो मुझे उम्मीद है नहीं देखे होंगे, वो मैंने हटा दिए। मैंने इसीलिए ये बार बार कर रहा हूं क्योंकि ये जो 3 नीचे के क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये वो क्वेश्चन मार्क्स है जिनका जवाब आप लोग देंगे अपने बोध के हिसाब से। तो ध्यान से सुनिएगा इस फॉर्मूले को। 2013 59 लाख करोड़, 59,023,12 और जीडीपी कितना था? 101, 101 लाख करोड़। मार्केट कैप टू जीडीपी कितना हो गया? 58 को माइनस किससे करना है? 100 से। क्या आएगा? 42। मार्केट कैपिटलाइजेशन घट गया है 42। 2013 की बात चल रही है, 2016 का मार्केट प्रेडिक्ट कर रहे हैं 42। तो मार्केट क्या थी 2013 में? 2013 में मार्केट थी 71,996 और रिटर्न्स कितनी आई? 17%। तो सेंसेक्स को कहां पहुंचना चाहिए था? 28,823 और सेंसेक्स पहुंचा 28,455। वेरी गुड। अब चलते हैं 2016, 2019 मार्केट प्रेडिक्शन चल रही है 2019 की 114,10,000 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन है जीडीपी है 129,85,000 करोड़। मार्केट कैप टू जीडीपी -12। ध्यान से देखिए -12, मैंने सही डाला है 2016 2019, सॉरी गलती हो गई है, मैंने 2017 डाल दिया। 2016 एक बार देखते हैं पहले। 86,0313412 ठीक है। 36 -36 था तो सेंसेक्स था 23,002 और रिटर्न आई 16%। तो सेंसेक्स पहुंचना चाहिए 35,904 और बिल्कुल डॉट टू डॉट 35,904 सेंसेक्स पहुंच गया। अब 2017 आता है। अगर मैं 2017 का आपको डेटा दे दूं, 2017 का डेटा दे दूं तो आपको 2020 की मार्केट तो पता है, तो क्या आप 2017 के डेटा से 2020 की मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये सवाल है। अब ध्यान से देखिएगा डेटा कहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन 2017 की थी 114,10,000 करोड़ और जीडीपी था 129,85,000 करोड़। तो मार्केट कैप टू जीडीपी 88 माइनस 100 इज इक्वल टू -12। आपको -12 मिल गया। 2017 में आपको पता था मार्केट कैप टू जीडीपी -12 है। अब अगर यहां पर -12 है, अब मुझे चैट बॉक्स देखना पड़ेगा, अगर यहां पर -12 है, ध्यान से सुनिएगा, तो आने वाले 3 सालों की रिटर्न्स क्या हो सकती है ये आपको प्रेडिक्ट करना है। कैसे करेंगे देखो 36
कोशिश करिए। नहीं 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 नहीं, मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करना, रिटर्न्स प्रेडिक्ट करनी है। मार्केट नहीं प्रेडिक्ट करना गुरदेश जी, रिटर्न्स प्रेडिक्ट करनी है। नहीं 5, ओके ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, इससे 5, 8, ओके 5, वेरी गुड। देखिए ज्यादातर लोग 5 के आसपास का जवाब दे रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं वो लोग, मैं बताता हूं आपको, वरना ये सवाल आप लोग बाद में मुझसे ही पूछने वाले हैं। तो मैं पहले ही बताता हूँ कि कैसे निकाल रहे हैं। 5 आंसर क्यों आ रहा है, 5 आंसर क्यों आ रहा है। ऐसे आ रहा है कि 12 तिया 36, 12 3 36। जब ये इसका 3 गुना था तो 16 का 3 गुना अगर माइनस कर दे तो वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए 16 डिवाइडेड बाय 3, 5.33। इसीलिए ये लोग 5.33 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, तो ये लगभग ठीक जवाब है। तो 5 लाद लेते हैं और यहां पर मार्केट डाल देते हैं। अब मार्केट क्या थी, 17 की मार्केट। देखिए मैं आपको डेटा दिखाता हूं। 2017 की 31 मार्च की मार्केट थी 29,620। यहां डालते 29,620। और आपने ऑल एन एवरेज सबने मिलकर के कितना बताया, 5%। तो सेंसेक्स कहां होना चाहिए, 34,290। सेंसेक्स कहां था, देखिए ध्यान से, 20 मार्च 2020, मार्च के महीने में सेंसेक्स था 34,103 पर। यानी जनवरी के महीने में, जनवरी 2020 में अगर आपने 2017-20 का डेटा एनालाइज करके रखा होता तो आपको पता था कि 3 महीने बचे हुए हैं और सेंसेक्स लगभग 40,000 से ऊपर है और मार्केट को मीन पर आने के लिए 34,000 आना है। इसका मतलब मार्केट जितनी ऊपर से तेजी से गिरेगी वो मीन को उतना तेजी से नीचे तोड़ेगी, क्योंकि कभी भी मार्केट जब मीन को तोड़ती है तो ये डिपेंड करता है कि वो मीन को कितना तेजी से ऊपर से आते हुए तोड़ रही है। जितना तेज वो ऊपर से आते हुए तोड़ेगी उतनी तेज वो नीचे जाएगी। इसी का कारण है विद इन 5 और 4 डेज आपको सेंसेक्स दिखाई दिया था 25,000, यानी मीन से लगभग 9,000 पॉइंट और नीचे देख पा रहे। पर मार्केट कैप टू जीडीपी, समझिए इस बात को, जो मीन है वो अपने पास सेंसेक्स को फिर खींच के लेकर के आता है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से नीचे चली गई थी सेंटीमेंट्स खराब होने की वजह से, और उसने फिर से मीन को ऊपर खींचा, मीन से मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऊपर खींचा। और आज सेंसेक्स आप लोगों के सामने, यानी 2017 में आप लोगों को 2020 का मार्केट पता था नहीं पता था। चलो अभी एक और आगे 2 और सवाल है, मजा आने वाला है। अगर मैं आप लोगों को 2019 का डेटा दे दूं तो आप 2022 का मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स पे लिख करके बताइए, क्या आप 2022 का मार्केट प्रेडिक्ट करना चाहते हैं? यस और नो? यस, बहुत लोग एक्टिव हैं। चलिए हम 2022 का मार्केट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू, इंटरेस्टिंग है। हाँ, 2022 के लिए मैं आपको 2019 का डेटा देता हूं। अब डेटा निकालने का ना सॉल्यूशन बड़ा आसान है। पहले क्या था कि बीएससी जाओ, वहां से कैपिटलाइजेशन उठाओ और आरबीआई की वेबसाइट पे इंतजार करो कब क्वार्टरली डेटा अपडेट करेंगे, वहां से जीडीपी का डेटा लो, डिवाइड करो, ये सब चक्कर खत्म। अब ना कंपनी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया और कई सारी कंपनीज ने किया है, मैं तो आपको सिर्फ आईसीआईसीआई का दिखा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट कैप टू जीडीपी लिख करके दे देते हैं। मार्केट कैप टू जीडीपी मार्च 2019 का था 81। ठीक है, डेटा ढूंढने का चक्कर ही खत्म। 81 को माइनस किससे करेंगे, 100 है ना। 81 माइनस 100 इज इक्वल टू 19। सवाल 19 था ही नहीं। अब सवाल ये है कि अगर 19 मार्केट कैप टू जीडीपी माइनस में है तो फिर रिटर्न 2022 में कितनी आने वाली है? सवाल आ चुका है, जवाब दीजिए। एट, 9, 23, बाय गॉड। और जवाब चाहिए? ओह गुड, 6.3, बहुत बढ़िया। 8 कैसे कर रहे हैं लोग, देखो समझिएगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए अपना अपना बोध है, सब अपना अपना कर रहे हैं।
समझिए इन लोगों ने 9 और 8 पे कैसे पहुंच रहे हैं, देखिएगा। इससे ठीक पहले का डेटा देखिए, जब -12 था तो आपने रिटर्न कितनी बताई थी? -12 था तो आपने रिटर्न 5% की बताई थी, है ना। तो क्या करें, 5 डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय रिटर्न कितनी, मार्केट कैप टू जीडीपी माइनस कितना है, -19 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 19 कर देते हैं, तो आंसर आया 7.9 यानी 8। तो सही जवाब है 8। तो 8 डाल देते हैं यहाँ पे। पहले मार्केट देख लेते हैं। 31 मार्च 2019 की मार्केट देखते हैं पहले। तो मार्च 2019 की मार्केट थी 38,672, तो यहां डालते हैं 38,672 और आपने रिटर्न बताई 9 और 8, ठीक है। 9 डालकर देखते हैं, सेंसेक्स पहुंचेगा 50,000 और 50,000 कब पहुंचेगा? 2022 में। 2022 में 50,000 के सेंसेक्स का मीन बनेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि वो मीन की बात कर रहा है, वो पीक की बात नहीं कर रहा और वो बॉटम की भी बात नहीं कर रहा। ये जो टूल है ये मीन बता रहा है आपको। अब ये कितना ऊपर से आएगा या कितना नीचे से जाएगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, हम सिर्फ मीन बता सकते हैं इस टूल के थ्रू। तो ये लगभग 50,000 के आसपास पहुंचेगा 2022 मार्च के आसपास जाकर के, ठीक है। अब जिन लोगों ने सवाल का जवाब सही दिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो, अब 2022 और 2020 के बीच में एक जबरदस्त साल आने वाला है, 2021, और ये 2021 बड़ा मजेदार साल होगा और ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग साल होगा 2020 से भी ज्यादा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये जानने के लिए आपको पहले जवाब देना पड़ेगा इस सवाल का जो आगे पूछा जाने वाला है। 2018 का मैं आपको डेटा दूंगा और 2018 के डेटा से हम 2021 को प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। 18, 19, 20, 21 3 साल की रोलिंग रिटर्न 2021। तो मैं 2018 का आपको डेटा देता हूं और 2018 का मार्केट कैप टू जीडीपी था 93। अब 93 को माइनस किससे करेंगे? 93 माइनस 100 इज इक्वल टू 7। अब अगर 7 मार्केट कैप टू जीडीपी 7+ है तो आने वाले 3 सालों की रिटर्न 2018 के हिसाब से क्या आने वाली है? अब बताइए, ये सवाल है, जवाब दीजिए। 2.9, 2, 3, 2। बहुत बढ़िया। देखिए सब लोगों के जवाब ना अब ठीक के आसपास आने लग गए, सब फॉर्मूला समझ गए हैं। तो 3% के आसपास रिटर्न आएगी 2018 से। अब 2018 का मार्केट देखिए सबसे पहले। 31 मार्च, सॉरी ये जनवरी का डेटा था क्या? ये डेटा था हमारा, ये डेटा था जनवरी का, राइट। तो जनवरी 2018 का मार्केट देखिए। जनवरी 2018 में मार्केट था 35,965, तो यहां डालेंगे 35,965, 35,965 और आपने रिटर्न बताई 3% की, तो 3% की रिटर्न्स के साथ आपका सेंसेक्स पहुंचेगा 39,000। 2021 में सेंसेक्स पहुंचना है 40, 39, 40, 39। इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखिए, और फिर मैं बताता हूं कि ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, आपकी इंटरप्रिटेशन मेरी इंटरप्रिटेशन से अलग हो सकती है। मैं क्यों कह रहा था कि 2020 2021 से ज्यादा खतरनाक हो सकता है? इसका कारण है, ध्यान से सुनिएगा बात को। जब मार्केट नीचे जाती है, सेंसेक्स नीचे जाता है, तो एक इन्वेस्टर के मन में क्या बात आती है? एवरेजिंग, थोड़ा और खरीद लेता हूं, थोड़ा और खरीद लेता हूं, और वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। वो सोचता है ठीक है अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, अभी नीचे आ रहा है ना, अभी ऊपर जाएगा। और एडवाइजर भी उसे समझा पाता है। वॉलेटिलिटी है ना, इक्विटी है, वॉलेटिलिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहो। जब मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो समझिए क्या होता है। इन्वेस्टर सोचता है मजा आता है, ऊपर जा रहा है, मजा आ रहा है। एडवाइजर कहते हैं चल थोड़ा रीबैलेंसिंग कर लो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ हो रहा है, वॉलेटिलिटी है, ऊपर जा रहा है, रीबैलेंसिंग कर लो। सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा परेशानी
तब आती है जब मार्केट बॉटम करती है। और ध्यान से देखिएगा इस बात को, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 2018, 2019, 2020 अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसने इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न नहीं कमाई है। अगर कोई पैसिव इन्वेस्टर है, मतलब ऐसा इन्वेस्टर है जो एसआईपी करे जा रहा है, तो 2018 से अब तक उसने रिटर्न्स लगभग नहीं के बराबर कमाई है। और 2020 के बाद 2021 भी लगभग ऐसा दिखाई दे रहा है। और 2022, 2023 और 2024 हिंदुस्तान के गोल्डन ईयर्स होंगे। हमारा काम है इन्वेस्टर को वहां तक लेकर जाना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बोर्डम है ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बाहर कर देगा। तो बचेगा कौन? जिसके अंदर पेशेंस होगी। और पेशेंस कैसे आती है? ये आखिरी बात है, इसको पकड़ के लेके जाइएगा। 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, 4 चीजें याद रखिएगा। पहला, रिस्क एपेटाइट। इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट जरूर चेक करें, कितना इक्विटी कितना डेट। दूसरा, एसेट एलोकेशन करें, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर को सजेस्ट करें। तीसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के इन्वेस्टर नहीं बंधेगा। और चौथा, समय समय पर रीबैलेंसिंग करें। ये 4 मूल मंत्र हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ना कि इन्वेस्टर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट हाँ, इन्वेस्टर को भी अगर समझाते हैं तो समझदार इन्वेस्टर इस बात को समझता है और अप्रिशिएट करता है। तो मार्केट में बने रहें, पेशेंस रखें। 2023, 2024 में फिर बता रहा हूं, गोल्डन ईयर्स होंगे हिंदुस्तान के लिए। और इन सालों तक कितने इन्वेस्टर बने रहेंगे और कितने ट्रेडर बन जाएंगे, ये सवाल देखने लायक रहेगा, इसमें मजा आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया। अब मैं आप लोगों के लिए खुला हुआ हूं जवाब देने के लिए। अगर कोई भी सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं दे सकता हूं, आपको लगता है, तो आप पूछ सकते हैं। कनक जी, मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूं। अगर कोई सवाल आपको ऐसा लगता है रेलेवेंट है तो प्लीज आप मेरी मदद करिए, जरा मुझे सवाल एक बार बता दीजिए। अब आप देख पाओगे? देख पा रहे हो सारे? ओके, yes, सारे लोग share the formula please, and a very informative session. We all can write whatever we have learned. हम लोगों ने जो भी चीज सीखी है अभी इस सेशन से, वरुण बहुत enthusiasm के संग, बहुत जोश के संग अपने concepts को share करता है। और आप लोगों ने जिस तरीके से देखा पूरे सेशन में, he was there on his toes and with full energy आप लोगों को पूरा सेशन डिलीवर किया। and I'm sure हम सब ने enjoy किया है Varun, and this is really nice and a very good session. So there is a question, आप लोग chat box में लिख सकते हैं। गुरदीश जी, तुमको कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? चलिए गुरदीश जी पूछ लीजिए फटाफट। कनक जी, राम। हाँ बोलिए। वरुण जी बहुत अजीज हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेशन बहुत अच्छा था और जितनी बार भी इनको सुनते हैं हर बार नई चीज और सुनने का मन करता रहता है। थैंक यू सो मच सर। सवाल पूछिए सर प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने 19 तक का डाटा लिया है, तो अभी 20 खत्म होने वाला है, तो 20 तक का डाटा नहीं आया है कुछ के? 20 का आया है सर। वही आपने अभी कहा ना कि कुछ चीजें अगली बार के लिए छोड़ देते हैं, तो 2023 अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। इसका डेटा आ गया है। और एक चीज मैं और इसमें देख रहा था जो मेरे मन का प्रश्न है, तो मैं ये देख रहा था कि किसी मंथ ये दिसंबर में लिया गया डाटा, किसी मंथ मार्च में है, किसी मंथ अगस्त में है, तो एक पर्टिकुलर हम फाइनेंशियल ईयर में या ईयर एंडिंग में क्यों नहीं उसमें है? ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन का सवाल होगा। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी घर में चले जाते हैं जहाँ वाइफ रहते हैं, और आप घर में गए, आपको पता लगा हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस लड़ाई को देख करके आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये हमेशा लड़ते रहते होंगे, ठीक है। ये जो डेटा है ना, ये हर बार सही होगा आप ये नहीं मान सकते। ये साल के किसी एक समय में जाकर के मीन पे टकराता है और वो समय सही होता है। नहीं, साल के किसी एक समय में जाकर
करके ये मीन को टच करता है और फिर वो मीन के आसपास अपना टारगेट सेट करता है। तो ये हम वो डेटा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो मीन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाई और लो नहीं पकड़ता, ये मीन पकड़ता है। इसीलिए कि जिस समय उसने मीन को पकड़ा उसी मतलब हमें और 20 का डेटा तो है ना, तूफान को रोक नहीं पाएंगे। गुरदीश जी 20 के डेटा से 23 का प्रिडिक्शन तो कर ही दिया है ना। ऐसा मार्केट होगा, गोल्डन ईयर्स होगा, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हैं? 23, 24, 25 सब प्रेडिक्ट। मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा, इसका मतलब हम तूफान को रोक नहीं सकते पर तूफान में बचत कर सकते हैं। यस, बचत, अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं उससे कि आपको झटका बहुत जोर का ना लगे, डेंट ज्यादा ना पड़े। Yes, thank you, Gurdeep ji. Or with this, any further questions? So काफी सारे questions थे, more or less आपने सबका we can give returns with less risk. Yes, जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं. So thank you so much, Varun, for a beautiful sharing. So thank you so much, sir. So again, thank you, Varun, for being a speaker for the Scale Up, Skill and Learning 21-week program on 17th of October 2020. With this, friends, we thank all the associations for participating, Media Partner, Business Line, and Tatva Talk for all the creative work, whatever they are doing for the whole program. And next week, friends, again is a very, very special week, which is again, क्योंकि आज से शुरू हो गए नवरात्रि, देवी दर्शन शुरू हो गए हैं, दुर्गा दर्शन शुरू हो गए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग 24 अक्टूबर को क्यों ना टॉप वुमेन ऑफ पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट जो हमारे इंडस्ट्री की हैं, 8 ऐसी महिलाओं, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे इंडस्ट्री में, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन इन आवर fraternity, but some of them are available and they are really doing good work. So they will be there next week to share their concept, share their ideas about MFD, mutual fund distribution and planning, and the way they are doing their business. And there is a lot to learn from all of them. Shifali, Nipa, Kanika, Rashmi, Shweta, Swati, Ruchika and Dr. Rekha. So हम सब जो ऑल ओवर इंडिया से ये सारे के सारे स्पीकर्स रहेंगे, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ देम. सो थैंक यू वेरी मच. एंड 21 वीक दिस ऑल थिंग कंटिन्यूज, एंड जिनके ये नाम कट गए हैं, ऑल ऑफ यू कैन एक्चुअली कनेक्ट एंड कलेक्ट योर 6 month सब्सक्रिप्शन वाउचर फ्रॉम निशांत. कनक जी, मैं माफी चाहता हूँ, एक चीज रह गई थी कि मैं आपको अपना फेसबुक का पेज दे दूं जिसपे हम चैट बॉक्स में डाल दीजिए, वो 3 लोग, तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, और फोटो खींचना चाहें तो फोटो खींच लीजिए, जिससे आप यहाँ जाकर के ये जो रिजल्ट हैं उसको आप देख पाएंगे. आपके टीम को बोल दीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में डाल देंगे ना तो अच्छा रहेगा. हाँ, मैं चैट बॉक्स पे मैं डाल देता हूँ सर. Or all of you can just search Varun Mittal and you will get him. Yeah. And you can put the same link on the FFF page also, Financial Freedom Fraternity page also. वहाँ से भी everybody can actually connect. Sure. So here is the page. Please put your what do you want them to put there, Varun? सर, ये मैंने पेज का लिंक डाल दिया है. अगर पेज के लिंक पर जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको उसका वो मिल जाएगा कि कौन विनर है, और ये चैट का रिकॉर्ड मिल जाएगा. So friends, that's end for today, and we really look forward to see you all next week again on Saturday, and that will be a big festive season के बीच में रहेंगे. I think that is Saptami और Sashti है उस दिन. So with all the top women in personal finance arena, we really look forward to have you all there and learn from each other. Thank you very much, Varun. As usual, it was a great show. Thank you so much. We end the meeting here. Thank you.